Very happy. This is unbelievable actually, because we are doing a live show after maybe 2 years, and it has happened because of HSNC and their corporation. And I would like to call Dr. Balani now to invite the guests, and let's light the lamp first before we begin the program. Thank you. Proceed. So let us light the lamp. And Yeah. You want to say something? First you welcome and then like. Yes. Achu, Dr. Balani, Achu. First we invite her. Good evening to one and all. Honorable Vice Chancellor, Madam. What is that voice? Voice is not ideal. Loudly, loudly. Thank you. Listen, Nate. Good evening to one and all. Honorable Vice Chancellor, Madam Dr. Hemlata Bagla, Sir Sushil Gajwani ji, Sir Sachin Nimbalkar ji, and all our guests, Mr. Harish Manglani sir, Vivek Maitre sir, Menka Shivdasani ma'am, Mehta ma'am, Shobha Lanchandani ma'am, Neeru Aswani sir, and तमाम घणा जेके आहिनि असांजा भाउर भेनरूं हिते अची गॾिया आहियो. तमामु ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे HSNC यूनिवर्सिटी जो ई पहिरियों सिंधी प्रोग्राम. HSNC यूनिवर्सिटी सिंधी जी यूनिवर्सिटी आहे ऐं असांजो हिन यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ लैंग्वेजिस असां हुनजी स्थापना कई आहे ऐं हुन में असांजा सिंधी मेंबर बि आहिनि ऐं असां अहिड़नि सिंधी मेंबरनि खे हुन में खयो आहे जिन जो हिन समाज जे में तमामु वॾो हिसो रहियो आहे लिटरेचर में सिंधी भाषा खे अॻिते वधाइण में ऐं तमामु जेको आहे हुन पंहिंजी सॼी जीवन ॾेई छॾी आहे ऐं उहे समाज जे हर कुंड कच्छ सां ॻंढियल बि आहिनि ऐं मूंखे लॻे थो इहो जेको बोर्ड आहे जो धीरे धीरे हुनजो विकास थींदो हुनजो वाधारो थींदो ॿिया बि सिंधी साहित्यकार असां सां अची जुड़ंदा ऐं ही पहिरियों प्रोग्राम आहे पेंडेमिक खां पोइ ऐं हिन खां पोइ असां घणा प्रोग्राम जेके आहे हुनजी रथा कंदासूं ऐं असां हर ॿार ताईं पहुचाए सघूं अहिड़ी असांजी जेका आहे कल्पना आहे. असांजो सिंधी भाषा में MA इन एजुकेशन 2 सालनि जो प्रोग्राम आहे त मां सभिनी खे वेनिती कंदुमि त ही जेको 2 सालनि जो प्रोग्राम आहे उहो कोई बि ग्रेजुएट जेको आहे उहो करे सघे थो ऐं सिंधी जेको आहे MA सिंधी जेको आहे उन खां पोइ असां हिन यूनिवर्सिटी में सिंधी रिसर्च चेयर बि शुरू करण वारा आहियूं जंहिंमें सिंधी भाषा में PhD बि करे सघे थी ऐं हुन में जेकॾहिं वज मिलियो त मां कोशिशि कंदुमि मां बि हिकिड़ो स्टूडेंट हुजां जेको सिंधीअ में PhD करे. अच्छा त पोइ जंहिंखे सिंधीअ में PhD करण जी इच्छा हुजे उहो हथु मथे करे त पोइ वरी असां हुन नमूने बिल्कुलु सचिन त तमामु हाणे असांजो सिंधी तमामु सुठी सिंधी ॻाल्हाईंदो आहे ऐं ॾाढो हिमथाईंदो आहे असांजे हर प्रोग्राम में HSNC बोर्ड जे हर प्रोग्राम में ईंदो आहे ऐं मां खेसि शुक्रगुज़ार आहियां त भई सिंधीअ लाइ जंहिं नमूने भॻवान झूलेलाल हिन जे मथां महर कई आहे हिनखे भाषा सेखारी आहे ऐं जंहिं नमूने सिंधी ॻाल्हाईंदो आहे मूंखे लॻंदो आहे चङा सिंधी एतिरी सिंधी न ॻाल्हाए सघंदा आहिनि जेतिरो असांजो सचिन भाउ ॻाल्हाए सघंदो आहे. प्लीज़ हैव अ वन राउंड ऑफ बिल्कुलु ऐं उहो ॻाल्हाईंदो बि आहे तमामु सुठी. हाणे असां सॾु कंदासीं हिते ईंदो ऐं तमामु सिंधीअ में ॻाल्हाईंदो. हिनखे ॾाढो पैशन आहे सिंधी भाषा ॻाल्हाइण जो ऐं हिन जा उचार बि शुद्ध सिंधीअ में ईंदा आहिनि. इन्हनि मां तव्हांजो वधीक वक़्तु न वठंदी ऐं मां तव्हां सभिनी जो वेलकम थो कयां हिन प्रोग्राम जे लाइ. भली करे आया असां सिंधी में चवंदा आहियूं ऐं अचो त हिन प्रोग्राम जी शुरूआति झूलेलाल जी जोत जलाए करे असां किथे कयूं. मैडम अचो लाइटिंग ऑफ द लैम्प कयूं हिन प्रोग्राम जो आगाज़ कयूं.
Yes, please wait. Thank you. Sachin. Sachin. Yeah. We work together, sir. Yes, sir. बेटा फोटो फटाफट राम बेटा फोटो निकालो जल्दी जल्दी करो बेटा फटाफट जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय वेलकम। प्लीज लाइक फोटो असी बोला के थे इन्विटेशन Yes. Let's get started. एक पटवना शेयर Okay, shall I start? हाँ अलीना Dr. Balani Dacho, we need to meet you here. नहीं वो निदेश ले रहा निदेश हाँ The felicitation coming. Keep ready. सीजन लेके आओ हाँ तो वो लोग वासुन बना होता है दुनिया कार्यक्रमों में जा रही है Please come here for a minute. And along with your better half, Yeah. Dr. Namrata. तो वहाँ आप Nacho, please do the honor. Yeah. Yeah. Vinny की जगता सफाई हो. Vinny की जगता है. This is the first time I'm doing. Mr. Vivek Mehta, could you please? Mr. Shinde, आप भी आइए साथ में. come. साढ़े 3 बजे put it together so yeah उनको साथ yes yes Sachin Limbadkar ji. Maharashtra Rajya Scientific Academy. 3 languages he is looking after Sachin. Yeah, Marathi, sorry, Hindi, Gujarati and Sindhi. Yes. And Sindhi सीखी भी आया होता. मुझे खबर है. Mr. and Mrs. Arun Bhavani, please. अच्छा साइन. Arun Babani has been writing in 3 languages, Sindhi, Hindi and English for the last 50 years. Honor to honor. And today he's here with us. Thank you. Thank you. Thank you. We should just मेरा workshop है in this program, let's thank and welcome Sushil Gadwani.
इन प्रोग्राम जो टाइटल ऑफ द रूट्स ऐं सिंधी में जेकॾहिं चइजे त पाड़ो एतिरो शानदार जेको आहे हिन जो टाइटल मूंखे लॻे थो काफ़ी अरसे खां पोइ केतिरनि सालनि खां पोइ मां जॾहिं लास्ट सिंधी पढ़ी काटवा शहर में गुजरात राज्य में 1983 में सिंधी भाषा में मां सिंधी पढ़ी उन खां पोइ मां घणा ई सिंधी प्रोग्राम जेके अटेंड कया उनमें साहित्य के लॻंदड़ प्रोग्राम तमामु घटि हुआ ऐं उनमें बि जेको प्रोग्राम आहे जंहिंमें असां सिंधी भाषा में जंहिंखे कविता चवंदा आहियूं उनजी प्रेज़ेंटेशन्स करण वारा आहियूं या उनखे ॿुधण वारा आहियूं उहो ॿुधी करे माना बिल्कुलु एॾी ख़ुशी जी महसूस थो थिए छो जो इहे कविताऊं जेके रचियल आहिनि उहे कविताऊं साधारण कविताऊं न आहिनि इहे कविताऊं जेके आहिनि गूढ़ियूं आहिनि इहे कविताऊं उनमें एतिरो सार भरियल आहे जेको मूंखे लॻे थो ऐं पार्टीशन खां पोइ सिंध जे विरहाङे खां पोइ उहे जेके ॻाल्हियूं असां ॿुधियूं हुयूं पंहिंजनि अबनि खां ॾाॾनि खां मूंखे लॻे थो उनजो दर्शन वरी थियण वारो आहे ऐं जेके यादूं असांजे कवियुनि उन्हनि सिटुनि में विधियूं आहिनि उन्हनि पंक्तियुनि में विधियूं आहिनि मूंखे लॻे थो वरी ताज़ियूं थी वेंदियूं ऐं जंहिं नमूने असां वटि भेण असांजी शोभा लालचंदाणी असांजे बॉम्बे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बि आई हुई ऐं हमेशह असांजे सिंधियुनि जे प्रोग्राम में वेंदी आहे जेको लिखंदी आहे जेका सिंधी अख़बार तव्हां मोकिलींदा आहियो सच पुच में मां त तव्हांखे वाधायूं थो ॾियां त जंहिं नमूने तव्हां सिंधी सेवा कंदा आहियो उहा क़ाबिल तारीफ़ आहे ऐं तमामु ऐं अहिड़ी शख़्सियतूं हिन प्रोग्राम में जेकॾहिं अचनि त मूंखे लॻे थो तव्हां अची करे हिन प्रोग्राम जो शान वधायो असांजी भेण आशा चांद हर ॾींहुं तव्हांखे हिकु वीडियो मिलंदो हर ॾींहुं तव्हांखे हिकु क्लास मिलंदो हर ॾींहुं तव्हांखे हिकु कॉम्पिटिशन मिलंदी हुनजे रग रग में हुनजे खून में सिंधी ऐं सिंधियत भरियल आहे अहिड़ियूं शख़्सियतूं जेकॾहिं असां सां गॾु हूंदियूं मूंखे लॻे थो सिंध हिते ई आहे सिंधी हिते आहिनि सिंधी साहित्य हिते आहे सिंधी कविताऊं हिते आहिनि सिंधी लिटरेचर हिते आहे ऐं मूंखे लॻे थो वरी असां हिकिड़ो जेका लर्निंग कम्युनिटी आहे मां चवंदो आहियां लर्निंग कम्युनिटी असां पंहिंजो जेको बैकग्राउंड आहे कॉमर्शियल सोशल एजुकेशनल उहो विसारे करे हिकिड़ी ॻाल्हि असां पंहिंजे मन में रखूं असां सिंधी आहियूं असांखे सिंधी भाषा खे असांजी संस्कृतीअ खे असांजे जेका विरासत आहे असां बचायूं अॻे पीढ़ीअ ताईं असांखे खणी वञूं अहिड़ी भॻवान दर मां विनती कयां थो ऐं तमामु ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे त मां हिन प्रोग्राम जो हिकु हिसो आहियां ऐं मां चाहियां थो त सभु गॾिजी करे हिकिड़ो प्रण कयूं गॾिजी करे त असां सभु गॾु हूंदासीं जेको बि प्रोग्राम HSLC यूनिवर्सिटी में थिए बम्बई में थिए ॿियनि जॻहियुनि ते थिए ॿियनि संस्थाउनि द्वारा थिए उनमें तव्हां बि अचो असां बि अचूं ऐं सिंधीअ जी जोति जेका आहे उहा जलाए रहूं उनखे अॻिते खणी हलूं ऐं असांजी नई पीढ़ीअ खे ॾियूं बसि इन कुझु शब्दनि सां असां हिन प्रोग्राम जो आगाज़ करणु चाहींदासूं असांजी रूहानी रहबर डॉक्टर हेमलता बागला उहो पाण सिंधीअ में पढ़ियल आहे उनखे अरबी सिंधी तमामु सुठी ईंदी आहे ऐं उनजो प्रेज़ेंटेशन करण जो जेको उन्हनि जी जेका सोच आहे उहा एतिरी माना एतिरी वॾी आहे एतिरी विशाल आहे जो असां जॾहिं प्रोग्राम सोचूं पिया ॻाल्हायूं पिया उन ते रिफ्लेक्ट पिया कयूं त असांखे तमामु घणो सिखणु मिलियो ऐं मैडम हिकु अहिड़ी कविता जी जेका चूंड कई आहे मुंहिंजो वजूद एतिरी तमामु सुठी कविता आहे उन मां हर को पंहिंजो पाण खे झांके ॾिसी सघे थो सम्झी सघे थो ऐं इवन असां सभु जेको आहे असांजो वजूद छा आहे उन जे बारे में बि काफ़ी वॾो हिकु मैसेज आहे उहो असांखे मिली सघे थो ऐं उहा तव्हांजे साम्हूं पेश करण वारी आहे ऐं असांजी HSLC यूनिवर्सिटी में सिंधी भाषा सिंधी संस्कृति सिंधी जेके कल्चर आहे या जेके रिचुअल्स आहिनि उन्हनि खे असां कीअं अॻिते वधाए सघूं था पोइट्रीअ खे नज़्म खे ऐं छा छा करे सघिजे थो उहो बि असां घणो सोचे रहिया आहियूं त असां चाहींदासूं त प्रोग्राम त थी वेंदो सभु सिखी बि वेंदासूं थोरो असांखे लिखी मोकिलियो रिसोर्सिस
किथां ह्यूमन रिसोर्सिस असां वटि किथां अचनि, लिटरेचर किथां अचे, असांजी लाइब्रेरी में वधीक बुक्स कीअं अची सघनि, सिंधी भाषा खे कीअं अॻिते वधाए सघे, त थोड़ा तव्हांजा सुझाव हूंदा असांखे ऐं तव्हांजो कंट्रीब्यूशन हूंदो त असांजे लाइ थोरो सवलो थींदो इन ॻाल्हियुनि खे अॻिते खणी वञण लाइ। असांजी यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव्स खे असां काफ़ी अॻिते खणी वञी सघंदासीं। बसि मां तव्हांजो वधीक टाइम न वठंदे एतिरे मां मैडम खे इनवाइट करण थो चाहियां। मैडम अचो, मंच तव्हांजो आहे। Let me announce that Dr. Hemanta Bagla is reading this poem impromptu because she was so impressed with the poem. Please. The poem has been written by Rashmi Ramani from Indore. Indore. Good afternoon. First of all, I'll be failing in my duties if I do not extend a warm welcome to each one of you to this Sindhi program, which is organized by HSMC University, and it is titled The Roots, the Exodus and Renaissance of Sindhi Community. And I'm thankful to Sachin Nimbalkarji for collaborating with us. So thank you so much, Secretary of Cultural Affairs, Government of Maharashtra, Sindhi Sahitya Academy, for joining us. I think all the programs, so I would correct Dr. Balani, it is not the first program, it is the third program of the university, and first 2 to 3 programs were organized under the leadership of the former Vice Chancellor. And I just saw a couple of minutes back, Dr. Niranjan Hiranandani had joined. I don't know whether he's still there, but a warm welcome to all the trustees of the board who are there online. We have Shri Kishore Khani, who will be joining very soon. Dr. Niranjan Hiranandani, who is the Honorable Provost of HSMC University, Mumbai. Trustee, Mr. Anand Harish, Mrs. Maya Shahani, and all the distinguished dignitaries whom we welcomed, who are present today, this afternoon. So my congratulations to Sushil Gajwani ji for organizing this event and connecting all the dots, what we were thinking. And as rightly said by Dr. Balani, that Sindh Hite Aaye, you know. So before saying this poem, couple of thoughts I would just mentioning yesterday, and it was when we talk about Sindh, Sindh chai, छा ज़मीन जो टुकड़ो है, जैसा असांजी लगाव आहे, पैदा त कोन थी आहे सिंध में, पर इहो शब्द असांजे कननि में, असांजे वॾनि खां, असांजे ग्रैंड पेरेंट्स खां ॿुधंदा आया आहियूं, ऐं ईअं लॻंदो आहे त असां उते जा उते बिलोंग था कयूं। अॼु बि मन थींदो आहे सिंध जे ज़मीन ते नतमस्तक करे, झुकी करे प्रणाम करे अचिजे, पर सिंध छा उहा ज़मीन आहे? पर सिंध एक्चुअली असांजी सोच आहे, हिकु धारा आहे, सिंधु नदी जी धारा आहे, जेका असां में पीढ़ीअ दर पीढ़ीअ वसंदी आई आहे। असां उते रहूं था, नथा रहूं, वया आहियूं, न वञी सघंदासीं, पर उहा सिंध जी जेका इमोशन, जेकी फीलिंग आहे, उहा हमेशह हलंदी रहंदी। सिंध मज़मून आहे या कविता आहे, कविताऊं आहिनि, छा आहे सिंध? सिंध हिकु प्रेरणा आहे, हिकु जीवन जी रहण तरीक़ो आहे, असांजी आशाऊं आहिनि सिंध में, असांजी हिकु वॾी सोच आहे जेका असां सभिनी खे जोड़े रही आहे। उहा आहे सिंध। असां किथे बि रहूं, असां उते रहंदासीं। हिकु ॿी ॻाल्हि, बिफोर आई से दिस कविता, which I feel, how long we will keep talking about the partition? छा पार्टीशन में सिंधी ही जो नुक़सान थियो हो? घणनि रिलीजन्स जो, घणनि ॿियनि ज़ुबान जो बि या पंजाबीज़ जो बि नुक़सान थियो हो। असां उहो पीड़ा, उहा ज़हन में केसिताईं रखंदासीं? छो न हिकु नई सोच करे इहा सोचूं त इन जे करे, like pollen grains went across the globe and we spread across the globe, and जिते वियासीं उते वसिजी वियासीं। त सिंध हिकु अहिड़ी रोशनी आहे जेका सिज तां निकिरी करे पूरे दुनिया ताईं पहुची वई आहे। पार्टीशन न थिए हा, शायदि असांखे इहा ख़बर न हुजे हा त असांजी क़ाबिलियत छा आहे, असां छा करे सघूं था। त हाणे हिन पीढ़ीअ खे उहा पीड़ा न ॾेई करे उहा सोच अॻिते वधायूं, इहा मुंहिंजी सभिनी खे इल्तिजा आहे। त सिंध हिकु फीलिंग आहे ऐं जेका असांखे पास ऑन करणी आहे जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स। When I was talking to Sushil Gajwani ji and he was talking about, I got so engrossed, and he just put this book in front of me. He gave me something else to read, but I chose something else.
It was the first page on that book of Rashmi Ramani, and I realized this is the feeling which I joined with. And this poem, this program, the roots, and the fact that poets are connected, it is the same poetry which can connect each one of them. And this is what they must be feeling. Sab lekhak yahi sochinda hunda je ina poem mein likhela hai. Muinjo wajud चाहे नीय न हुंदस मां तॾहिं बि मुंहिंजा लिखियल अखर त हूंदा कविताऊं त हूंदियूं चंड खे निहारींदड़ चकोर पखी हूंदा सिज ॾांहुं मुंहुं करे मुड़कंदड़ सूरजमुखीअ जा गुल त हूंदा प्यार जी सुहाण हूंदी सुकल गुलनि ऐं पीलनि पननि में अलमारीअ में बंद पुराणियुनि चिठियुनि खे पढ़ंदे मज़ो त ज़रूर ईंदो कंहिं नई आखाणीअ जो मूंखे यादि कंदे कॾहिं बेचैनी थियई मूंखे यादि कंदे कॾहिं बेचैनी थियई त हथ लॻाइजांइ मुंहिंजे किताबनि खे ऐं महसूस कजांइ मुंहिंजे दिलि जी धड़कन खे Mukhe yaad kande, there's a tribute to all the poets who have written, and everything is packed in the books, and they must be the ancient books for our generation. But I really feel and get touched. Mukhe yaad kande kade becheni thei. Mukhe yaad kande kade becheni thei. Ta hath lagaye jaye munje kitaban ke and महसूस kajaye munje dil ji dhadkan ke. I really congratulate and thank Rashmi Ramani if I get to meet her. What a wonderful way of presenting this company. Thank you connecting all the dots, Sushil Gajwani ji. Yesterday I spoke to Rashmi Ramani ji. I was poem padhan wala ayo. She was very happy. Che tam ke padha tha jo. Munjo lafzan jo safar tha hani shuru kayo wa. These were her words. So beautiful. And if I know her, she does 24/7 only poetry. She only writes. Chethi munjo kitab munjo addiction hai. Oh, wow. So a big thank you to Rashmi Ramani for writing this. And I would like to add from where you left, ma'am, that yes, our purpose is to pull out literature from the books, from the libraries, and bring it out to everybody, to know what people are writing. Why should it be locked into the libraries? It should be all for everybody. Thanks a lot. It was wonderful. And I was just reading that HSNC motto is where ideas come to life. And this is one idea which did not let Sushil Gajwani ji slip. Shah Sahab, Mukhe ke Shah Sahab jo couplet to yaad hai. Suta uthi jag nindar na kaje etri. Sultani suhag nindhun kare na mile. So this is what has happened with Mr. Gajwani. He sleeps. He dreams about this poetry session. When he's awake, he dreams about the poetry session, and he sees to that we all also dream big like him. So today it is thanks to him that we all are here. Okay, now in August 21, we lost our very, very, very good poet, Mr. Vasudev Mohiji. We would like to pay a small tribute to him by presenting a poem which has been recited by him. And he passed away in August. I spoke to him in June or July because I love this poem. Within 1 minute, he sent me a mail, please use it wherever you want to use it. I didn't know but I want everybody to hear it. So we are playing Mr. Vasudev Mohiji's poem. 1 minute. Mr. Kishu Mansukhani has joined our trustee of the board, and he's there online. I think he just disconnected. Discord. Yeah, he's there. Yeah, but we can start the poem. Welcome, Mr. Mansukhani, you're welcome. I hope you can hear us. Welcome. So unmute yourself. Sindhi mein galai, Sindhi thi. हाँ खबर आशा Mr. Mansukhani Bali kare. Yes, very nice to be with you all. स्वागत आहे
I'm glad. I'm very happy that ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त तव्हां शुरू कयो आहे ऐं माफ़ कजो जो मां थोरो देरि सां थो जॉइन कयां पर हलंदा we start the program and I'll participate later on. ज़रूर ज़रूर तव्हांजो इंतज़ारु रहंदो असां शुरू कयूं था ॾाढी ख़ुशी थी मूंखे महिरबानी थैंक यू Thank you, sir, for coming, for joining this program. Vasik Muiji ji here poem असां में try कईसीं कि असां चऊं but we cannot say the way he has said it so we are playing माग छुटी गया देश के छाछों माग छुटी गया देश के छाछों सीमा बटजी गया देश के छाछों जिंद कैसा जुड़ल हिंदुस्तान सिंधुस्तान जिंद कैसा जुड़ल हिंदुस्तान सिंधुस्तान सोच वठिया देश के छाछो सोच वठिया देश के छाछो बैरकूं कर मिलिया बैरकूं कर मिलिया मेहरबानी भरी बैरकूं कर मिलिया मेहरबानी भरी से बिटाए जिया देश के छाछो माँ बिया माँ हुआ गोद के जीवना माँ बिया माँ हुआ गोद के जीवना घाट बस जिया देश के छाछो घाट बस जिया देश के छाछो जाम सागर नदियों ओ प्यासा रहो जाम सागर नदियों ओ प्यासा रहो कंठ सुखिया देश के छाछो कंठ सुखिया देश के छाछो बोल अपने वणन पर बुधन खांसियो बोल अपने वणन पर बुधन खांसियो लफ्ज रख दिया देश के छाछो लफ्ज रख दिया देश के छाछो श्याम स्वामी सजन श्याम हस अयास श्याम स्वामी सजन श्याम हस दयाल नाव लट जिया देश के छाछो बाग में छुटी जिया देश के छाछो सीमा वट जिया देश के छाछो सचिन जी आपने पोएम समझी समझा विवेक जी shall I translate for you into Hindi हम हर बार सुनते हैं हर बार I get goosebumps when I listen to this poem I would like to tell everybody that Sushil Gadwane ji has an NGO which is called $1 Million Confidence. Sindh Mujiyama, That's one. Suhat Mujiyama, Sindh Mujiyama, Suhat Mujiyama, Chalithi, Chalithi,
हाणे असां सिंध लाइ ॻाल्हायूं पिया त we are going to start a program with Shah Abdul Latif's one of his eternal stories, Sasui Punu. Shah Sahab हूअं त 7 सोलमूं लिखियूं आहिनि, पर सभिनी खां famous, most popular is Sasui Punu because it was set in Sindh. And continuing with our innovation, Sasui Punu has been written in English first time ever by great poetess Menka Shabdasani. So we are going to invite Menka Shabdasani and Sushil ji to present this wonderful poem. It is a dialogue between Sasui and Punu. And for those who don't understand Sindhi, मैं आपको बताती हूँ, Sasui Punu एक सिंधी folk story है. वो प्रेजेंट करेंगे, पहली बार इंग्लिश में लिखी है और वो हम प्रेजेंट करेंगे. ससी और पुनु का डायलॉग चल रहा है, लव स्टोरी है. हर लव स्टोरी में वैसे तो लैला मजनू ने शादी नहीं की थी, लेकिन ससी और पुनु ने की थी, लेकिन बिछड़ गए थे. Over to you, please come. Vendor of musk, we must meet again. The scent of my longing is like wine. In the haze of the wilderness, as mountains stretch, I see the shimmer of caravans burning in the distance. Punmu, my prince, your fragrance brights the sun, caresses my blistered. For a moment, a river flows through my parched mind. This moment is divine, but it will pass. Vendor of musk, we must meet again. The scent of my longing is like wine. I, Saswi, who has harnessed the moon, the Vamra in my bones. I know the rough edges of wicker on my skin. I was a baby when they set me afloat to meet my fate in distant lands. Though my aging parents, Nau and Mandur, loved me, they sent me away when the Pandit gazed into my newborn eyes and drew my future in the sand. She will marry a Muslim, he said, and their faith would not allow it. So I learned to speak with the stars that guided my path, and they brought you, my love, to me. I seek you now, Punhu, through stone-hearted cliffs. I gasp in the shrinking air, but no mountain or desert will defeat me. Vendor of musk, we must meet again. The scent of my longing is like wine. I searched so hard for you from the lonely peaks of Balochistan, where they knew me as Prince of Kesh Makran, son of Ari Jan. But for me, that was not enough. I traversed through ridges, valleys, and peaks on the road to Thatta, selling ribbons and musk. Tales of your beauty were my compass, and this trader's garb became my second skin. I had no jewels upon me then. There was just one I needed, and that was you, whom I found and lost. I'd heard of Muhammad, the washerman, chief of his tribe at Bambur, how you floated up by the riverbank, unscathed by currents, protected by God. I'd heard of his kindness. He was the only father you knew. The day spun like cotton, and the spinning wheel turned towards me. My heart was caught in these silken threads of love. Your face is a moon. Your heart, my guiding star. My love, open the heavens for me. Punhu, my prince, I hear you like the breeze gently upon my ears.
But above me is an unrelenting sky. On the ground, my toes begin to bleed. I see you smile on the mountaintop. I step forward and you are gone. There's a karma in the distance. I wish I could be a grain of sand in a camel's eye, which would take me closer to you. How delightful it was when your caravan arrived in what seemed like a lifetime ago. Happiness was a bottle of rare perfume, such wonders that I had never seen. Necklaces of shell, bangles of baloch, so delicate in rainbow shades. But it was you who brought the most joy. Those dizzying wares paled in your presence. How heavenly it was to be with you. How much you gave up with such grace. Vendor of musk, we must meet again. The scent of my longing is like wine. Sasui, my love, is that your voice in my dreams? I hear you in a haze. But where are you? How happy I was in those dhobi ghats, knowing I would come home to your smile. The tribal chief turned me into a washing, testing my love and my skill at clothes. He isn't from our caste, Muhammad said, and I had to prove him wrong. Unused to the labor, I tore the garments, but no one complained. A gold coin tucked into each damaged dress was a small price to pay for our love. And what did it matter if a few clothes were ripped when our hearts were stitched together? The promise that Muhammad extracted to stay in Bhambor was easy enough for me. I could not return to my king anyway, for my queen was here in these dhobi ghats. Our laughter, like lather, bubbled over, and the days turned to fall in our hands until my brothers arrived. You were so good to them. You gave them so much love. But they battered us on the dhobi ghats, wrung us out like faded cloth, tore the very seams of our lives. General, Hotu, Notu, what have you done? What have you done? You must believe me, Sasui. The night they dragged me away, intoxicated on camelback, I had not drunk so much. There was toxic wine in my glass. Your face is the moon. Your heart, my guiding star. Sasui, my love, open the heavens for me. My heart is in pieces, like the clay cutters I wore. And this wasteland does not end. The scent of the Saraswati lies deep within its bones. But at night, the thirsty foxes hunt, and nature itself is the enemy. The wind that took your footprints away, the sun which refuses to set, the sky that burns as snuffs the cool air out. The moon that casts dark shadows in these haunted hills. There's baboons and wolves rear up to block my path. But as long as life, like a migrant traveler, shuffles beneath my skin, I must keep moving, Punhu. I must see your face, or my thirst will not be quenched.
For a minute, hope sprang in the Papa Mountain, where water gushed from a rocky mound, and your face rippled back at me and smiled. I cupped my palms in you. Your strength flowed into my face, and the spring returned to my step in the lonely expanse. I made it to Mabur, where a hut on a hillock rose, and my heart surged again on the jagged path where another human had walked. But Punhu, this shepherd, had an ugly smile, and I was not his sheep. I asked for water, and when he turned his back, I prayed, Punho. I prayed to save me from his grasping hands. And the hillock broke into two. I fell into the womb. Painter of Musk, I will meet you again. The strength of my longing is wine, and we shall be one with the divine. The earth has crumbled beneath my feet. The earth has crumbled beneath my feet. Your absence is sharp against my throat. Sasui, I must find you. I must leave. My brothers must let me go. The king, my father, wanted me back, but he will not see me die. So I ask if I can bring you here to call Kech Makran your own. The canyons are calling, and I will leave on the fastest camel I can find. My brothers betrayers, join me. They dare not disobey Ari Jam. In the burning landscape of my being, Sasui, you stand sturdy as the Khabar tree. But what is that at the Mambuhar? O shepherd, which saint's fresh grave lies here? And what is this silken fragment that peeks up from the ground? Surely I've seen it in Bambur. It's a garment that Sasui wore. But how's it here? Trapped in this terrain. Shepherd, tell me the story, and I will tell you mine. Sasui, are you there? Sasui, are you there? This silence is more than I can bear. The earth cracks. The earth cracks. The ridges crumble. I fall feet first into the crack. The heavens open up. The heavens open up in the ground beneath. The moon shines bright on shifting rock. I hear you, Sasui, as I hear myself. Punhu, you have come to me. I will no longer pine. Here at last, one divine. I have never heard Sasi like this. I've never imagined. Excellent. Sir, up on our Excellent. You are here, not till 6 p.m. You are here, not? Yes, yes. Okay, Thank you. let's give a round of applause again to It's present here with us. Can you stand up, Bhushan ji? Bhushan? Thank you. ये छोकरो भूषण सुठो पियो लगी सिंधी कोने पर समझे वो शादी पियो ऐसे से शुरू कर हाने एप्रिसिएशन हमेशा समझ में ईंदी है Yes, of course. And Sasui,
in the video was none other than Menka ji's daughter, Damini Kane, who is not an actor, but because she loves her mother so much, she said, yes, I will work in this video where my mother is And the music is also presenting the excellent. point. That is Music Music has been done by Amit Kumar Aswani, who's not here today, he's gone for a shooting. He's very. And Pere Pavani San Gaiwa, Rishika Advani. Joint producer is Sanjay Pandey. And we have our joint producer, who's Mr. Sanjay Pandit, Please. Bhushan's father. Okay, मां हाणे हेॾा हिते कैमल्स ॾिठा त मूंखे हिकु ॻाल्हि मम्मी जी यादि आई. मुंहिंजी मम्मी चवंदी कि कैमल लाइ सिंधीअ में घटि में घटि 12 अखर आहिनि. मूंखे हिकु ई ईंदो आहे उठ, पर मम्मी चवंदी हुई. ऐं हा मम्मी चवंदी त 12 अखर आहिनि चांगो तुंहिंजे चांगे ते मां चंदन चाढ़िया. त मम्मी यादि अची वई. ऐं मम्मी चवंदी सिंधी इज अ वेरी रिच लैंग्वेज. सचिन जी एंड विवेक जी, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, सिंधी लैंग्वेज में 52 अल्फाबेट्स हैं. तो मेरे मम्मी डैडी कहते थे 52 अल्फाबेट्स है तो हम सबको लोन दे सकते, किसी से लेंगे नहीं और कोई भाषा से लेने की जरूरत नहीं, हम देते रहेंगे. We can give loan without any interest because there is an exchange of languages happening. So we are a rich community not only by money but by literature and of course our culture. So that is I remembered mummy. Every moment we remember mummy dada. Whatever we do in Sindhi is for mummy dada. हमारे मम्मी डैडी सिर्फ सिंधी के लिए सब कुछ करते थे, हमको भी वही सिखा के गए. शोभा जी और मुझे. Okay, now actually I got with this. It was so touching. अरे हिंदी में चवंदा आहिनि, where's अरुण जी? Is coming? Okay. हिंदी में चवंदा आहिनि कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि. हमारे बीच में आज सिर्फ एक ही कवि आए हैं, अरुण जी आ सके हैं, जो हमारे दिल तक पहुंचते हैं. So we'll wait for him. He's gone to the washroom. Anybody would like to say anything about Sasri Punu? Because this concept, the visualization is all Gajwani Saab's, but I was with him. Yes, we should do in English. There's nothing wrong in doing in English because we have to leave something for the next generations after us. No, now only one thing Yeah, is required, that you should be able to reach out to public. You have written this for those who do not know Sindhi. Exactly. No, Or those Asha, people let me can tell you one appreciate thing. Now, English. whoever sees it, उनकी curiosity वधंदी कि क्या story कह रही है आसाम. Rani, that's right. But what I'm trying to say, first of all, we have to reach. Unless they really see this or read this. Yes, so they are going to see it. Now, this is Asa here. No, you are very mistaken that you are going to see. It is very difficult to reach out to all the Sindhis. I just experienced, I know it. But you have It's reached not out to my easy. granddaughter. Let me tell everybody that Asha Shan has made a wonderful app for Sindhi learners. Sajodi mobile khani mein diya. Asha Shan auntie, Sindhi app chalo. The post sikhe thi wo. So you have reached, you have succeeded, Asha. She's really. Sorry, Dr. Balani would like to say something. Yes. Ma'am, when I was listening to both of you, I was just reflecting that we teach Shakespeare while teaching English to them. Why do not translate Sindhi literature and the literature from other languages like Hindi, Marathi, and regional languages, and start teaching our culture in English language to the children? Yes, There are two I books. found that that there was a potential. Two books written by Mr. Mohan Gehani. He writes in Sindhi and he translates it in English, but the editing has been done by Menka Shaktisani. We have two books. We're going to read poems from here too. And he's a wonderful poet. In fact, he's an unsung poet. Unji poetry te kahi dhyan mein nahi do, except me. I keep sending him messages. So today I've decided we are going to read from his He's book. better known as a historian. Yes. Very few people know about the poetry. So he did a very brilliant thing with some years ago. Menka, chalo na hai. Yeah. Till Arunji comes back. It's okay. We don't want to rush him. Actually, I'm going to say all this later. It's okay. So we talk about people not knowing the Sindhi language and reaching out to them. But there is this reluctance to bring English into the mix so that it can act as a bridge. I mean, I keep getting told that, you should speak in Sindhi if you're interested in the culture. But there is a generation of Sindhis that has not spoken the language from childhood. I'm seeing not among the audience.
there is a generation that is now reclaiming that heritage and saying we have lost something. We need to figure out what we have lost. And I will give you my own example. We're talking about translations. In 1998, Anju Makhija and I worked with Dr. Arjun Shah to translate Sindhi partition poetry. At that time, nobody was talking about Sindhi, the Sindhi story in the partition tragedy. And I had poets telling me, Kimat Harisinghani told me, "Mukhe kona hai poem? I don't have any poem on Sindhi." And Shad said, "What nonsense is he talking? I will show you a poem by him." And there was a beautiful poem on a deer being lost in the desert. Because Sindhis did not want to think about the trauma, there was a cultural amnesia. They did not want to talk about that experience of partition and what it did to their lives. So today, and I think this is the third generation after partition, That's true. where today youngsters, and now people who become older like me, are saying that that we need to reclaim the heritage. We may not be able to speak the language the way that we should, but we would like to learn, and we would like to do it through what Dr. Satish Rohira called cultural bypass surgery, where you come to the language through culture. And that is what people like me are doing. Saz Agarwal is a very well-known name. You've all heard of her. Nandita Bhavnani is another very, she's done very valuable books. And we are working to use English as a bridge to bring Sindhi to larger audiences. And that book that Sahitya Akademi published in 1998, there was a Marathi poet in the audience. It's happened at Jai Hind College, the launch. We did not know this Marathi poet, Niranjan Usgare. He came up to us afterwards and said that he thought he was very sensitive and culturally aware, but he did not realize there was a whole community that had suffered like this. So, and living in Bombay. So he decided to translate that book into Marathi. So through Sindhi to English to Marathi. And that book was also translated, that was also published by Sahitya Akademi. So I think these cultural bridges need to happen. And even if we can't necessarily speak the language the way we should, and I would like to be able to speak it, and Dr. Vellani has promised to help me. And Asha Chand's app is also very, very useful. It's very useful. But it is when people like Mohan Gehani, who, he translated his own poems. And then he came to me and said, "Can you help me with editing it?" So I think these interactions are important, which is why today's program is Okay, Sindhi thanks. and English. Thank you, Menkaji. Arunji has come. Arun, Tadena, move worried. I'll repeat what I said. में चलता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी तो ताम पहुंचने असांजे दिल में. So we have ना कुछ घट कौन था. No, don't say that. Arunji has been writing for 50 years and इनके लिखण ते विरासत में मिलियो शायद इनजे डैडी ॾाढा वॾा लेखक हुआ पर अरुणजी Sindhi, Hindi, and English में लिखा. I don't know which order. I think Sindhi, Hindi, English, that order, Arunji. So we are going to present Arunji's poem, Amma Lai, which is going to be performed by Neeru Asrani. Neeru Asrani ji doesn't need any introduction. Chakanta, Jite Penda, he has been working on Sindhi stage and drama for the last 45 years. Gatte kar पंजताली साल तंगे थे Neeru ji. TV में दिसंदा ads. Okay, 43 years. Now उनके TV में दिसंदा ads में दिसंदा. He writes his dialogues. He writes his. Actually, I can say one thing, Neeru ji. Amitabh Bachchan ji का picture है. तो तांजिला चवंदी. Neeru can speak English. He can walk Sindhi, talk Sindhi, dance Sindhi, and now he's going to enact a Sindhi poem. Over to you, Acho. शुरू क्या होना था पैणी का रिक्वेस्ट मोबाइल्स वन सॉरी मूंखे विसरियो मोबाइल्स महिरबानी I'm really very sorry silent थे मोबाइल मां ॾाढो डिस्ट्रैक्ट थींदो आहियां ऐं पोइ मुंहिंजो टेम्पो ख़राब थी वेंदो आहे सटकंदो आहे पोइ मां सटकी वेंदो आहियां sorry Neeru, I forgot to announce हा सो मां रिक्वेस्ट कंदुसि महिरबानी करे मोबाइल्स बंदि कयो ऐं जॾहिं कोई बि ॻाल्हाए थो कोई बि पोएट्री पढ़े थो
उनजे विच में कंहिंजी बि बुण न अचणु घुरिजे। पंहिंजे पासे वारे सां न ॻाल्हायो, जेको ॻाल्हाए थो उनखे ॿुधो। That's true. जेको तव्हांजे साम्हूं बीह करे कुझु चवण जी हिमत थो करे उनजी अखियुनि में ॾिसो, उनजे फेस ते पढ़ण जी कोशिश कयो भई हू छा चवण थो चाहे। छाकाणि ही वक़्तु उन माण्हूअ जो आहे, ही वक़्तु तव्हांजो कोन्हे, ही वक़्तु हिन माण्हूअ जो आहे। सो आशा जी जे मुंहं ते ॾाढी सुठी स्माइल आहे, जेका मुंहिंजे लाइ कॾहिं कॾहिं ईंदी आहे। अमल आहे, अमल आहे। अमल आहे। भवानी साहब इरशाद इरशाद बोले चुका माफ़ चवण जी कोशिश कयां थो। ॿुधो अथम हिकिड़ी सिंध हुई, ॿुधो अथम हिकिड़ी सिंध हुई, नंढपण वांगुरु अबहम, वॾपण वांगुरु प्राचीन, ॿूटनि जियां मदमस्त, वणनि जियां दानिशमंद। सही सभागा संत हुआ, दरवेश जे अनंत हुआ। सिंधु नदी वहंदी हुई, अल्हड़ घर में मस्ती हुई। रोटी रोज़ी सस्ती हुई, रंगीन फिजा में चुस्ती हुई। पंहिंजनि परावन जो न भेद हो, पंहिंजनि परावन जो न भेद हो, कंहिंजो कंहिंसां न विरोध हो। वेर न हो, अंधेर न हो, प्रेम हो, मतभेद न हो। ॿुधो अथम हिकिड़ी सिंध हुई। पैसा ॾाढा थोड़ा हुआ, पर आने बियाने में सुखिया हुआ। पैसा ॾाढा थोड़ा हुआ, आने बियाने में सुखिया हुआ। सब कंहिंखे सभु कुझु मिलंदो हो, दिल जो दिल सां रिश्तो हो। 10 माण्हू हुआ घर में, पर सॼो कुटुंब सताबो हो। 10 माण्हू हुआ घर में, पर सॼो कुटुंब सताबो हो। ॿुधो अथम हिकिड़ी सिंध हुई। छेज हुई, लाॾा बुआ, छेज हुई, लाॾा बुआ, रातियां रातियों भगत हुई, संतनि जा मेला पिण हुआ। अम्मा चवे अड़े मज़ा हुआ, उहे ॾींहं ॾाढा सुठा हुआ। अम्मा चवे अड़े मज़ा हुआ, उहे ॾींहं ॾाढा सुठा हुआ। पर अॼु जे हिन पापी युग में हिकु शंका उथे थी मन में। अॼु जे हिन पापी युग में हिकु शंका उथे थी मन में। छा सिंध हिकु सच्चाई आहे या कंहिंजी घड़ियल कहाणी आहे? छा सिंध हिकु सच्चाई आहे या कंहिंजी घड़ियल कहाणी आहे? सच्चाई हिकु शइ पुराणी थी वई, सादगी हिकु ॻाल्हि अजाई थी वई। किथे हली वई सिंध हुआ? मस्तनि जी ॿोली सिंध हुआ। छा ज़मीन जो हिकु टुकड़ो हुई या वक़्त जो हिकु वहकरो हुई जंहिं वई हुई तारीख़ जे वाह में? छा ज़मीन जो हिकु टुकड़ो हुई या वक़्त जो हिकु वहकरो हुई जंहिं वई हुई तवारीख़ जे वहाव में? अॼु जे हिन पापी युग में सिंध लॻे हिकु मिठो सुपिनो। चंद फोटा ऐं कुझु ख़त कॿटनि में, चंद फोटा ऐं कुझु ख़त कॿटनि में। अफ़सोस आहे हिकिड़ो मूंखे, जॾहिं हर को वञे थो ॻोठ पंहिंजे, मां हिते ई रहिजी वेंदुसि, मां हिते ई रहिजी वेंदुसि, मां हिते ई रहिजी वेंदुसि। But this is a very rare सामूहिक lyricist वेठो थिए तव्हां। पंहिंजी कविता पहिरियों दफ़ो ॿुधी आहे। वो पहिरियों दफ़ो ईअं ॿुधी आहे। पढ़ण सां अखर में कोन ईंदो आहे दिमाग़। न न When somebody tells you,
I Then know, you but then really still with the enactment, it Now, makes a love you difference. both of you all. It was wonderful. That is, Thank you, sir. love you. That is to you, man. अरे तू का एना श्याम जी Still more right. बड़ी No, okay, Ronnie Rama Madhika Purush Buddha. बड़ी का बड़ी God bless you. Thank you, Neeru ji. Thank you. Okay. साहब जी बस इतनी आती है अच्छा जिते गोठी उते गोठ जिते सिंधी उते सिंधी तो असां जिते सिंधी आहियूं उते ई सिंध ठाहे वेठा आहियूं. Now there is a different dimension to this poem which we are going to give, and that is going to be done by Anju. Anju, where is Anju Konai? Please come. She is going to read this adaptation of this poem in English. Same poem जेको अरुण बाबानी सिंधी में लिखिया. English version also you have written, Arun ji. She's going to read that in English. Before she reads, Anju is a Bengali, but she's going to read this poem in English. She is a student of BTTC College. She was rather. She did a BA from there. Now she's doing her MA in education, but she loves poetry. Next time we'll make you say it in Sindhi. Today, English. Okay? And the poet who has written is sitting right there. Okay. Okay, so before I begin, you sir actually did it pretty well. I think you've done it. I didn't even feel like coming here. No, no, no. You can't back out. No backing out. Okay. And to Arun sir, if I make a mistake, I truly apologize from my heart. Ma'am, I'm a little hard of hearing. Okay, I'm sorry. I'm listening. Come closer. When I stand there and listen, that's better. Okay. I'll listen to you from there. No, no, Okay, so I have heard that there was a sin, innocent like childhood, ancient like old age, carefree like saplings, sage like trees. There was kind-hearted saints, innumerable dervishes, a flowing Sindhu river, carefree at home. Living was easy and energy in the colorful atmosphere. No difference in ours and theirs. Nobody opposed each other. No enmity, no darkness either. Only love or arguments, no arguments. I have heard that there was a sin. Less money, but peace, despite little money. Enough for everyone. Hearts were related. There was bonding. Dozens living together in the houses, but the family was living in abundance. There was Cheja, there was Ladas, Bhagats throughout the nights, meeting of the saints too. Amma said, "Array, it was so much fun. Those days were so beautiful." A doubt arises in my mind. In these times, is sin the reality, or was it someone's imagination? Is sin the fact, or is it a fiction fabricated by someone? Has the reality been discarded? Has simplicity become useless? Where has the sin disappeared? That sinned and its saints. Was it just a piece of land, or was it just a flow of time that dawned in the flow of history? In today's times, sin appears to be a sweet dream. Only memories remain. Alas, when everyone gets to their native place, I shall be left behind, all alone. Is sin a reality, or was it someone's imagination? Is sin a fact, or is it a fiction fabricated by someone? Thank you. Thank you, Anju. Thanks a lot. That was wonderful. Anju, do you know what is Cheja? Beautiful, beautiful. You should have asked me or Sushil ji. It's a Sindhi type of dance. वो सचिन जी और विवेक जी को बताओ. You know what is Lada? Lada is what we sing during weddings. We have typical Sindhi songs which we sing during the weddings. If you understand the meaning, you will. I know about Lada. Yes, so Cheja is a type of Sindhi dance.
Thanks a lot, Anju. That was wonderful. शायरों की बस्ती में कदम रखा तो जाना, शायरों की बस्ती में कदम रखा तो जाना, गमों की महफिल भी कितनी खुशी से जमती है, गमों की महफिल भी कितनी खुशी से जमती है. Why did I say this in Hindi? Because now we have a Hindi presentation. And हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, उसके सिवा तो हमारा जीवन बढ़ नहीं सकता है. लता जी के गाने, मोहम्मद रफी के गाने, लता जी के भजन, किशोर कुमार, मन्ना डे, you name it and all are there. Gulzar ji, Javed Akhtar. So now we are going to have a presentation in Hindi by Bhushan Pandit. Bhushan, please come. Okay, Bhushan ji is going to read Hindi poetry जिसको लिखा है शशि गजवानी ने. शशि गजवानी जी सुशील गजवानी के छोटे भाई हैं जो कोल्हापुर में रहते हैं लेकिन अब लंदन में है. I don't know whether he is logged in. शशि जी, how do we? Yeah, he's there. शशि गजवानी है. शशि गजवानी सिर्फ अच्छे कवि नहीं हैं, लेकिन कहानियों भी लिखते हैं. शशि जी भी 3 भाषाओं में लिखते हैं, सिंधी, हिंदी और मराठी. उन्होंने मराठी में 11 फिल्में बनाई हैं सुशील जी के साथ मिलकर, और कई हिंदी और मराठी में निर्माता, निर्देशक, अदाकार सब हो चुके हैं. अब भूषण उनकी कविता पढ़ेंगे हिंदी में. और भूषण इज द यंगस्टर हु हेल्प्ड अस टू मेक द ससुई वीडियो, पुनु वीडियो. एंड ही हैज 1 अंक मराठी सीरियल्स और पिक्चर्स में है, तो दूसरी है बॉलीवुड में. और डोंट वरी, यू विल डू वेल वेयरएवर यू गो. अभी आप शशि जी की कविता सुनाइए. थैंक यू सो मच. ओके, उनकी मां मर गई है. हाँ, उनकी मां मर गई है, फिर भी वो जश्न मना रहे, जाम पे जाम टकरा रहे, जैसे मां को गंगाजल पिला रहे हो. कोई गले मिल रहा है तो कोई गला फाड़ रहा है. 5000 साल पुरानी सभ्यता का ज्ञान झाड़ रहा है. रुदाली द्वारा आलापे अजीबोगरीब सुर लड़खड़ा रहे. ऊंचे स्वरों वाली ये नस्ल जोर से ठहाके मार रही. कवर चंदर की मिठास कागा की जुबान पे ताजा हो रही. उनकी पहनी जुबान पे जाम ही जाम है सवार. भाव तथा शब्दों के बीच खुद ही की है ये दीवार. मां के पोतों का दादा विधिवत मुंह मीठा कर रहे हैं, लेकिन दादा को पोते की बोली बोलनी पड़ रही है. तोड़ मरोड़ कर जोड़ी पूंजी, टूटे फूटे अज्ञात शब्दों की आज की पुश्तों को कर रही है दान दादी नानियां कल की. इन्होंने ही अपनी मां को घर से निकाला है. वो गई कहा, वो होगी कहा, इसकी खबर ना ली किसी ने. सच तो यह है कि इन्होंने ही अपनी मां को मारा है, अपनी मीठड़ी अमड़ को सरेआम धिक्कारा है. इन्होंने ही खींच ली अपनी मां की जुबान, इसीलिए खामोश हो गई माद्रे जुबान, माद्रे जुबान, माद्रे जुबान. थैंक यू. Shashi ji has penned. Yes. Will he unmute? Shashi ji? Unmute कर. हाँ जी. क्या होता ताली पोइट्री ॿुधी था? पंहिंजी पोइट्री ॿुधव? ॿुधी सुठी थी. ऐं तव्हांजो जेको जबरदस्त हो, तव्हांजो जेको बि इहो तव्हां थियो त इहो ग्रेट. आई एम थ्रिल्ड. माना हिकदमि माना थोरो ख़ुशी थिए पई. I'm humble, Shashi ji, पर ताली पोइट्री ॾाढी वंडरफुल हुई. Does that mean that you're talking about Sindhi language? उनकी मां मर गई. It's very sad. Please ये ना जो हमारे positive poetry लिखो. हिनखे ॾिसण खां पोइ त लॻे थो
खाए ताकि ही इससे लगे तो कि उनकी माँ मर गई, नहीं मरी है. नहीं फिर से दोबारा माँ वापस आ गई. Thank you, Shashi. Thank you. Next time we want a positive poem because we are all here. Asa ayu Sindhi. असां मां ईअं लिखंदुसि तॾहिं तव्हांखे थोरो माना माण्हू जाॻंदा, कुझु चवंदा, पोइ ॻाल्हाइण शुरू त कंदा, जीअं बि लॻो तव्हांखे. हिन करे मां ईअं लिखंदो रहंदुसि जीअं मूंखे लॻंदो भई भई यार. महिरबानी. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, HM. Fantastic. Thank you so much. Next time Sindhi में आपको बोल. Yes, of course. मैं सिखाऊंगी आपको. मैं मराठी बात करती हूँ ना, फिर आप सिंधी को नहीं मानते. Okay, अब आऊंगा थोड़ा सीखूंगा. Okay, welcome. Thank you so much. Okay. Thank you. I'm reminded of Prabhu Bappa. I keep quoting Prabhu Bappa because he used to come to our house. जाम दफ़ा ईंदा हुआ त हुननि हिकु गीत लिखियो, शल सिंधी तू मानी जुवानी. शल सिंधी तू मानी जुवानी थे साई साई. And Poma सोचने कि he didn't mean only the Sindhi language. He meant every Sindhi person. कहता मानो जुवानी and साई साई थे. So that was Prabhu Bappa uncle, our favorite poet. तांता जाम time कर रहे होंगे अरुण जी. Okay, I'm losing track now because I'm getting very emotional. We have Gayatri Lakhyani Chawla who couldn't come here. But she didn't want to lose this opportunity to read her poem in English. She is an award-winning poet, translator, and French teacher from Mumbai. She is the author of 2 poetry collections, Invisible Eye and The Empress. Today, she is going to present a poem titled Leaving Sindh. Gayatri Chawla. Gayatri, good evening. Welcome to our session. We would have loved to have you here. But you can read a poem. Your poem, sorry. You're reading Leaving Sindh? Yes. Okay. Good evening, everyone. I'm delighted to be here today amidst a stellar panel of writers, poets, and artists. Thank you, Sushil ji, for inviting me for this wonderful journey, Roots, the Time Travelers. It's an honor to be part of the journey. Today, I'm going to be reading a poem that I've dedicated to my father. My father was born in a small village called Manju, in a place called Gadi Khata in Pakistan. And after a few years, they shifted to Karachi. Am I audible? Yes. Yeah, okay. So they shifted to Karachi and they started living in an ancestral home called Jamshed Quarters. And during the partition of 1947, my father, along with my ancestors, migrated to Indian shores. So, along with the furniture and pots and pans, they also got along nostalgia and the longing of a homeland that they never visited again. I've grown up listening to my father's stories about Karachi and how the children would play in Jamshed Quarters, how he would buy sana pakora, and how they would go for camel rides. So there's sort of a lot of nostalgia, and I've encapsulated all of that in poetry. So this is a poem from my father. It's called Leaving Sindh. Leaving Sindh. Occasionally, I feel the loss of place, of inheritance, of a homeland. Not because my grandfather said it or my father felt it, just a needling sensation, a homeland of my own. Every day a taste of its savories in the rich wheat-grained cookies. Mother packs in my Milton lunchbox. Baked papads made of gram dal in a see-through plastic bag. She packs these too. One doesn't go without the other. Tonight, I look at mother's hands, pounding the marble, mortar, and pestle, crushing pods of garlic. Her eyes have swollen. She hasn't slept a wink last night, grinding her dream with mortar and pestle. I wonder how it would feel to leave behind Jamshed Quarters, the window
overlooking the Sindhu. The white sheets left unfolded on a bed undone, wardrobes stripped of its identities, suitcases filled with pangs of insecurity, pretending it would get better. I wonder how it would feel to be homeless. Occasionally, I feel like an island, an unnoticed speck, a lost postcard with no address, sitting in the post office with a stamp reading, Undivided India. Thank you. Don't go away. What's the remaining program? Thank you. हाणे असां सिंध खे एॾो यादि कयो आहे त असां हाणे हिकु सिंध मां शाइर खे इनवाइट कयो आहे. हलूं था असांजे वॾनि जे वतन सिंध ॾे. अॼु असां सिंध हैदराबाद मां बहितरीन शाइर जुड़ियो आहे जंहिंजो नालो आहे साकिब आबड़ो. साकिब, he is a multi-talented personality. साकिब पारां प्रोफेशनल रेडियो टीवी स्टेज कॉम्पियर आहिनि, voice over and dubbing artist ahin. He has received many awards for his contribution towards Sindhi language and culture. He is a pioneer of starting FM radio in Sindh. In Sindhi, presently he is serving as head of campus FM 92.6 at Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro. Yeah. This is such a coincidence that here we are sitting in HSNC University and he is fresh to University, Mehran University. This is maybe God's way of connecting us. Over to you, Sakib. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Jai Jhulelal. Jado tunjo naam bajabu odiai manga. रिय थंभे रिय थोणिए तू छपर तू छांव कुजाड़ो कहाँ तोखे मालूम सब था. सोई राह रद्द करे सोई रहनुमा व तो इज़्ज़ मंतशा व तो ज़िल्ल मंतशा. यूनिवर्सिटी हॉल में मौजूद अवां समूरन हाज़रीन ऐं डिजिटल दुनिया वसीले शिरकत कंदड़ पंहिंजनि समूरन सॼणनि खे साकिब अबड़ो जो सिक भरियो सलाम. हक़ मौजूद. जय झूलेलाल. नमस्ते. सभ खां अवल मां इन प्रोग्राम खे सिंगारींदड़ सवारींदड़ सजाईंदड़ समूरे सथ जो शुक्रगुज़ार आहियां. सुशील साईं, मैडम बरखा ऐं ख़ासि तौर ते मैडम आशा चांद हिते वेठल आहिनि. उहो तारुफ़ जंहिंखे सॼी सिंध सॼो पाकिस्तान सुञाणे थो ऐं ज़ाहिरी आहे सिंधी जिते जिते वसनि था हिननि जे पोरे खां केरु माण्हू हूंदो जेको वाक़िफ़ न आहे. ऐं अॼु हिन HSNC यूनिवर्सिटी में जेके बि अकेडमी सां तालुक़ु रखंदड़ बि शख़्सियतूं मौजूदु आहिनि सभिनी खे आदाब. हिकिड़ी मैडम गायत्री ॻाल्हि कई, पाण गाड़ी खाता चयूं ऐं हिन वक़्तु उन्हनि खे इहा सराही ॾियां त हिन वक़्तु जंहिं गाॾी खाते जो उन्हनि ज़िक्र कयो आहे हिन वक़्तु गाॾी खाते में ई मौजूदु आहियां. असांजो 50 साल पुराणो ही गाॾी खाते जो घर आहे. जंहिं गाॾी खाते जे घर जो अवां ज़िक्र कयो आहे या पाड़े जो ज़िक्र कयो आहे, ज़ाहिरी आहे इहा जेका नॉस्टैल्जिक फीलिंग आहे. ऐं अॼु जो गाॾी खातो उन्हनि खे ॾेखारे सघां थो तस्वीरुनि में, वीडियो में. इहा कनेक्टिविटी आहे यकीनन. त हिकिड़ो त यूनिवर्सिटीअ जो हवालो ॾिनो मैडम बरखा, ॿियो गाॾी खाते जो हवालो ॾिनो. बहरहाल मूंखे हिन ॻाल्हि जी सराही आहे जो अवां मूं तिफ़ले मकतब खे अॼु हिन बहितरीन रंगारंग प्रोग्राम में पंहिंजा एहसास निकोर एहसास पेश करण जी सआदत ॾिनी आहे. चौसुठे सां प्रोग्राम में अवां जा ॾो चंद एहसास अर्ज़ु रखंदुसि. भूए भलारी जिंदड़ी मुंहिंजी, भूए भलारी जिंदड़ी मुंहिंजी, ॾाढी मिठड़ी दिलड़ी मुंहिंजी. भूए भलारी जिंदड़ी मुंहिंजी, ॾाढी मिठड़ी दिलड़ी मुंहिंजी. दुनिया में भल किथ बि हुजां मां, मुंहिंजी सुञाणप सुंदड़ी मुंहिंजी. ऐं चंद एहसास कुझु बंद आहिनि अवां जे ॾाढो अर्ज़ु रखां थो. उनवान ॾिनो अथमि सिंधी आहियां जगत में, सिंधियत मज़हब आहे मुंहिंजो.
अर्ज़ कयमि रंग ऐं नसुल जा वेछा मत भेद मां न ॼाणा रंग ऐं नसुल जा वेछा मत भेद मां न ॼाणा पंहिंजो लखनि में पधरो ॿोलीअ सां मां सुञाणा रंग ऐं नसुल जा वेछा मत भेद मां न ॼाणा पंहिंजो लखनि में पधरो ॿोलीअ सां मां सुञाणा अजरक हुजे या काशी जंडी जनब आहे मुंहिंजो अजरक हुजे या काशी जंडी जनब आहे मुंहिंजो सिंधी आहियां जगत में सिंधियत मज़हब आहे मुंहिंजो अर्ज़ कयमि मुअंदड़ो सदियुनि खां ॾे शाहिदी सिंधियुनि जी मुअंदड़ो सदियुनि खां ॾे शाहिदी सिंधियुनि जी महिमान नवाज़ी यारो पई ॻाए बि सिंधियुनि जी मुअंदड़ो सदियुनि खां ॾे शाहिदी सिंधियुनि जी महिमान नवाज़ी यारो पई ॻाए बि सिंधियुनि जी अमुनाश्ती बि आऊं सूरह लक़ब आहे मुंहिंजो सिंधी आहियां जगत में सिंधियत मज़हब आहे मुंहिंजो ऐं अर्ज़ कयमि त पखड़ा छॾे अबाणा जंहिं वेल थिया रवाना पखड़ा छॾे अबाणा जंहिं वेल थिया रवाना आकाश हाव हारियो सारींदे थिया ज़माना पखड़ा छॾे अबाणा जंहिं वेल थिया रवाना आकाश हाव हारियो सारींदे थिया ज़माना धरतीअ धणी धिकाणा दुखड़ो गज़ब आहे मुंहिंजो सिंधी आहियां जगत में सिंधियत मज़हब आहे मुंहिंजो अर्ज़ कयमि कहिड़ा खणा मां नाला केॾा ॾियां हवाला कहिड़ा खणा मां नाला केॾा ॾियां हवाला सिंधी जिते जिते आहिनि उते जमाला कहिड़ा खणा मां नाला केॾा ॾियां हवाला सिंधी जिते जिते आहिनि उते जमाला हर हंध साख आहे हर हंध अदब आहे मुंहिंजो सिंधी आहियां जगत में सिंधियत मज़हब आहे मुंहिंजो ऐं हिन दौर में बि सिंधी केतिरा रेलेवेंट आहिनि उन जे इज़हार जे लाइ बस चऊं हिन दौर डिजिटल में या लिख ॾिसी गूगल में हिन दौर डिजिटल में या लिख ॾिसी गूगल में मुंहिंजी लिपि आहे उकरियल MS विंडोज़ जे दिलि में हिन दौर डिजिटल में हिन दौर डिजिटल में महिरबानी हिन दौर डिजिटल में या लिख ॾिसी गूगल में मुंहिंजी लिपि आहे उकरियल MS विंडोज़ जी दिलि में ईंदड़ नसुल जे लसब सारो सबब आहे मुंहिंजो सिंधी आहियां जगत में सिंधियत मज़हब आहे मुंहिंजो ऐं आख़िरी अहसास जंहिंमें लाखिणी लतीफ़ भिटाई घोट सां पंहिंजी वालियाना मोहबत ऐं अक़ीदत जो इज़हार आहे जंहिं लिखियो आहे अबड़ो वॾ वड़ो त शाइरां तिफ़ले मकतब ख़िदमत गुज़ार आहियां शाइरां तिफ़ले मकतब ख़िदमत गुज़ार आहियां मुर्शिद जे कौल तामा दम दम निसार आहियां अबड़ो वॾ वड़ो अर्ज़ कयमि शाइरां तिफ़ले मकतब ख़िदमत गुज़ार आहियां मुर्शिद जे कौल तामा दम दम निसार आहियां अबड़ो वॾ वड़ो इहो इश्क अजब आहे मुंहिंजो सिंधी आहियां जगत में सिंधियत मज़हब आहे मुंहिंजो सिंधी आहियां जगत में सिंधियत मज़हब आहे मुंहिंजो वॾी नवाज़िश लख लाइक़ लख तोरा असांजी हिकु चीफ गेस्ट I saw Vinita Nagpal ji is sitting there. अॼु अची न सघी. She was one of the chief guests, but she couldn't come. Vinita ji, would you like to say something? हिकु मिनट ॻाल्हाईंदा तव्हां? उनको unmute कयो था पाण खे. हेलो, जय झूलेलाल. जय झूलेलाल. हा, मां हिकु मिंट न थोड़ा वधीक मिंट ॻाल्हाइण चाहींदसि. Okay. Hello, can you hear me? हाँ. Can you all hear Vinita ji? हाँ, ॿुधायो. अच्छा. Actually मूंखे अफ़सोस आहे जो मां तव्हांजे विच में न आहियां कुझु तबियत जे करे. सभिनी जो जय झूलेलाल. सभिनी
शिरकत कंदड़ सभिनी खे मुंहिंजो नमस्कार आहे। मां बि कुझु शेयर करण लाइ खणी आई आहियां, छाकाणि जॾहिं हिंदुस्तान पाकिस्तान थियो त मां 1.5 साल जी हुअसि। कैन यू हियर मी न? ओके। मां जॾहिं हिंदुस्तान पाकिस्तान थियो त मां 1.5 साल जी हुअसि। मुंहिंजे जेके मिट माइट हुआ, सिंध जूं यादियूं उन्हनि जूं ताज़ियूं हुयूं। त जीअं मां हींअर किताबु लिखियो मांदी थियो न मारुई, उहे जेके एहसास मूं ॿुधा, जेके महसूस कया, उहे एहसास मां हिन किताब में लिखिया आहिनि, जेके 2 पन्ना 1-2 पन्नो आहे, उहो मां तव्हांखे पढ़ी थी ॿुधायां। मांदी थी मारुई जो ही हिकिड़ो चैप्टर आहे, नंढो ई आहे, तव्हांजो वधीक वक़्तु न वठंदसि। ही वक़्त जी करवट, ज़िंदगीअ ही बिल्कुलु मां महसूस कयो जेको उन्हनि ॾींहंनि में उहो आंखों देखे हाल जेके चवंदा आहिनि उहो आहे। ज़िंदगीअ नाटकीय ढंग सां मोड़ खाधो। 1947 में विरहाङो थियो। विरहाङे जी चोट असां सिधनि सबाजड़नि सचनि सिंधियुनि ते पई। पंहिंजो वतन, पंहिंजियूं माड़ियूं, मिल्कतियूं सभु छॾे अची हिंदुस्तान में दरबदर थियासीं। पोइ कीअं वक़्त खे सलाम कंदे आहिस्ते आहिस्ते वसण लॻासीं। जग ज़ाहिर आहे, मतिलब त हर सिंधी पाण में हिकु कहाणी आहे। हर सिंधीअ जी कहाणी तव्हांखे ॿुधण में मिलंदी। ऐं मां भावुक थी वञा त माफ़ कजो। मुंहिंजे परिवार बि पहिरियों पोरबंदर, पोइ राजकोट, आख़िर अहमदाबाद में साह पटियो। सॼा सारा 2 साल लॻा हित हुत क़ौम जो दर्द जो रिश्तो जोड़ींदा विया। मूंखे आखाणियुनि ॿुधण जो बेहद शौक़ु हो। असांजे बंगले ॿाहिरां बाग हो, चौधारी मेहंदीअ जे ॿूटनि जो बनोड़ो हो। मोतीअ ऐं गुलाब जे गुलनि जा ॿूटा ऐं रात राणीअ जी खुशबू अञा बि यादि अथमि। बाग जे विच में खीरोलिन जो घाटो वण हूंदो हो। उन जा केसरी नंढा नंढा गुल सभिनी खे वणंदा हुआ। बाबा घणो करे जॾहिं आराम करणो हूंदो हो न त इन वण जी छांव में खट विछाए जीअं ई लेटंदा हुआ, असां ढिग ॿार सौट सभु गॾिजी करे बाबा खे वराए वेंदा हुआसीं। बाबा घणो करे उन्हनि खे असां ॾाढो डिस्टर्ब कंदासीं ऐं चवंदासीं त असांखे आखाणी ॿुधायो। बाबा असां खां खट विछाए बाबा लेटंदा हुआ। ढिग ॿार ख़ासि करे बाबा खे आखाणियूं ॿुधाइण लाइ वराए वेंदा हुआसीं ऐं पोइ पंहिंजनि नंढड़नि हथनि सां वारे वारे सां पेरनि में आङुरियुनि में ठका कढण जी रिश्वत ॾेई बाबा खां आखाणियूं ॿुधंदा हुआसीं। ऐं पोइ बाबा कॾहिं गंद जे ढिग वारे कांव जूं, रुसणी ॾेॾरीअ जूं, कॾहिं देव परीअ जूं, राजकुमारीअ जूं, या कॾहिं कंवर भगत झूलेलाल जी महिमा जूं कहाणियूं ॿुधाईंदा हुआ। ऐं अंग्रेज़नि जे ज़ुल्मनि जूं बि कहाणियूं ॿुधाईंदा हुआ त कीअं असां ते ज़ुल्म कयऊं। ऐं कॾहिं सिंध में छॾे आयल पंहिंजी राजाई ठाठ जूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा हुआ, जंहिंमें अञा बि शायदि पंहिंजे वतन वापसि वञण जी आस क़ाइमु हुई। चवंदा हुआ, अरे ॼाण सभु हालत ठीकु थी वेंदा, असां पंहिंजे वतन वापसि वेंदासीं। मूंखे अञा ताईं इहे नंढी हुअसि पर मूंखे यादि आहे उन्हनि जो चवणु। चवंदा हुआ त ॼाण सभु हालत ठीकु थींदा, असां वापसि उते हलंदासीं ऐं पंहिंजो जेको असांखे ठाठ हुआ उहे माणींदासीं। वक़्तु गुज़रंदो वियो, वक़्तु कुझु धुंधलो थी हक़ीक़त कहाणियुनि जो रूप वठंदियूं वयूं। बाबा जॾहिं बि सिंध जी ॻाल्हि कंदा हुआ, उन्हनि जे आवाज़ में जे दर्द जी छाप कची उमिरि में ई दिलि ऐं दिमाग़ ते छपिजी वई। जीअं जीअं वॾी थींदी वियसि, सम्झ में ईंदो वियो त बाबा जो दुख न सिर्फ़ु बाबा जो न पर मुंहिंजी सॼी क़ौम जो आहे। हर हिकु सिंधी वक़्त जी मार सही रहियो आहे। ऐं पोइ इन तरह पंहिंजी मिठड़ी क़ौम जे दर्द सां मां जुड़ंदी वियसि। मूंखे ख़ुशी आहे त मां सिंधी आहियां। जीअं जीअं पंहिंजी महान सभ्यता जी ॼाण पवंदी थी वञे, तीअं तीअं मां पाण खे फ़ख़्राइतो सम्झां थी। मूंखे इहा बि ख़ुशी आहे त मुंहिंजो वतन सिंध आहे, जिते असांजी क़ौम जूं जड़ूं आहिनि। मूंखे वतन जी मिटीअ जा जुज़ा मुंहिंजे शरीर में समायल आहिनि। भले मां 1.25 साल जी हुअसि,
जो विरांगो थियो, पर उन विरांगे जे ताज़नि ज़ख़्मनि जी जेके मुंहिंजे परिवार में क़ौम सठा मां शाहिद आहियां। विरामे खां पोइ हिंद में राजकोट में कॾहिं कॾहिं बाबा या कॾहिं पंहिंजे दादा सां आंगुर पकड़े शरणार्थी कैंपुनि ॾियण वेंदा हुआ। उते जी सिंधी भाउरनि भेनरुनि जी आछ कयल चांहि पापड़ बिस्किटनि जी महिमान नवाज़ी मूंखे अञा यादि आहे। जेके उते कचनि घरनि में मां वञी खाईंदी हुअसि ऐं घर ॾिसी हैरान थींदी हुअसि, जेके चादरुनि ऐं पर्दनि जा घर हूंदा हुआ। हाणे थो महसूस थिए त अहिड़े हाल में बि सिंधी महिमान निवाज़ी करे पंहिंजी क़ौम जी सभ्यता कायम रखी वेठा हुआ। वारे सिंधी तू कमाल आहीं। Thank you. हिक नंढड़ी इन ई एहसास सां भरियल देवी नागराणीअ जी नंढड़ी पोइट्री आहे, उहो मां पढ़ां थी। अॼु यादि आयो आहे वतन, उनजी मिट्टी उनजो चमन, विसरे नथी खुशबू उहा थी यादि अथम। माण्हुनि जो हित आ काफ़िलो, कोई बि रहे थो तॾहिं बि रहे थो फ़ासिलो, दिल खां परे दिल थी रहे, धारियनि जियाई दम में दम। सुपनो सजाए दिल रखियो, गम खे लिकाए दिल रखियो, शर्माए थी हर याद ते जहिड़ीअ तरह नई दुल्हन। हल्को करे छॾ बार तूं, अशकनि जा मोती लाड़ तूं, ॻाए मधुर तूं राग को, देवी कजाए घटि पंहिंजो गम। हिकिड़ो सुवाल मां आहे, हिकिड़ो मूंखे जेको सुवाल खटकंदो आहे इहो ई आहे, सिंधी नई टहीअ लाइ आहे जेके आईंदह जी नस्ल जा एवज़ी आहिनि। हाणे सुवाल थो उथे त छा ईंदड़ पीढ़ी पंहिंजी ॼाण सुञाणप पंहिंजी संस्कृति संभाले सघंदी? छा हूअ इहो सम्झी सघंदी त संदन वरसो केतिरो क़ीमती, शानदार ऐं मज़बूत हो? यानी इहा सिंध जा संसार में झूनी सभ्यता रही आहे। उहा मोहन दड़ो असां धरती, उहा धरती जिते सिंध में आयल ॿियूं धारियूं क़ौमूं जीअं त ईरानी, यूनानी, तुर्क, मुगल, अरब, खान, मीरनि ऐं टालपुरनि जूं लड़ायूं ॾिठियूं ऐं जिते पछाड़ीअ में अंग्रेज़नि जा ज़ोरदार मुक़ाबला ॾिठा। छा अॼु टही महसूस कंदी इहा ॻाल्हि? धन्यवाद। मूंखे वरी एम कमल साहब जूं 2 सिटूं यादि आयूं। बस ॻाल्हि न कढ छा छा सठोसी। दिस इज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। बस ॻाल्हि न कढ छा छा सठोसी, हर ॻाल्हि ते दिलि हाणे ॾुखी थी, हर ॻाल्हि ते दिलि हाणे ॾुखे थी। Now we are getting emotional. त असां हिकु कमु था कयूं, मिस्टर सचिन निम्बालकर इज इन अ हरी टू ही हैज टू अटेंड सम अदर प्रोग्राम। तो उन्हनि खे चऊं था अचनि 2 मिनट ॻाल्हाइनि। पर मैंने आपके लिए एक मराठी कविता भी लिखी, एकत्र येणे ही सुरुवात, एकत्र येणे ही सुरुवात, एकमेकांना सोबत राहणे ही प्रगती आणि एकमेकांसोबत काम करणे म्हणजे यश। सचिन जी आप क्यों जा रहे हैं? हिंदी अकेडमी में एक प्रोग्राम है, डबल रोल करो ना। नहीं मेरे पास तो ट्रिपल रोल है, हिंदी है, सिंधी और गुजराती भी है। हिंदी है। ठीक है, सिंधी के साथ पैशन हो जाओ। तो सभी के जय झूलेलाल। सबसे पहले द रूट्स, द एक्सोडस एंड रेनेसांस ऑफ सिंधी कम्युनिटी इस कार्यक्रम में निमंत्रित करने के लिए मैं एचएसएनसी बोर्ड और एचएसएनसी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट किशु मनसुखानी सर का, श्रीमती बागला मैडम का शुक्रगुजार हूँ, मातावान जो शुक्रगुजार आया। सिंधी कल्चर, रिच सिंधी कल्चर को अप्रिशिएट करने के लिए और यंग जनरेशन में इसे सेंसिटाइज करने के लिए आज जो कार्यक्रम आयोजित किया मैडम ने, एक अभिनंदनीय उपक्रम है। मैं पहली बार ऐसा सिंधी कार्यक्रम सुन रहा हूँ, पोएट्री रिसिटेशन। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैडम ये कार्यक्रम इतना अच्छा लगा कि मुझे ये कार्यक्रम एकेडमी के लिए कॉपी करने की इच्छा हो रही है कि ऐसे ही कार्यक्रम एकेडमी तरफ से भी आयोजित, हम आएंगे करने को। बिल्कुल। मैं एकेडमी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी महाराष्ट्र में सिंधी अदब सिंधी अदब ए सखावत जे वाधारे लाइ काम करे रही आहे। चई करे वक्त बे वक्त अकादमी तरफा केतिरा प्रोग्राम थींदा रहंदा आहिनि।
अकादमी के इन आयोजनों के लिए HSNC बोर्ड और HSNC यूनिवर्सिटी ने हमेशा ही अकादमी का सहयोग किया है। पिछले साल अकादमी और HSNC बोर्ड ने मिलके सिंधी साहित्यकारांची विरासत असांजी अमानत इस सीरीज के 3 पार्ट किए थे। इस वर्ष भी 2 पार्ट हो चुके हैं और 2 अगले महीने में नियोजित है। इसी के साथ महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी ने एक द अनसंग हीरोज का एक सिलसिला शुरू किया है, जो अकादमी का सिंधी में बोलता हूँ। इसी के साथ महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी ने द अनसंग हीरोज इस सिलसिलो शुरू कयो है। आजादी जी जदोजहद में जिन पंहिंजी जीवन अर्पण कई, देश जे अहिड़नि शहीदनि ए महान शख्सियत को याद करण असांजो फर्ज है। जही करे अकादमी सिलसिलो शुरू कया है। हिन सीरीज जो पहलो पानो 21 जनवरी अमर शहीद हेमू कलानी जे शहादत जे नियत ते नशर कयो हुआ है और इसका सेकंड पार्ट दादा हुंदराज दुखियाल जी पर था। थर्ड पार्ट कुमारी जेठी सिपेमलानी जी पर था। चौथा पार्ट दादा चोइतराम गिदवानी जी पर था। 5वां एपिसोड जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर प्रेम रामचंद्रानी जी पर था और नेक्स्ट एपिसोड 6वां जो है वो 25 फरवरी को दादा दयारामदास दौलतराम जी पर आ रहा है। ये सभी एपिसोड एवरी फ्राइडे 7 PM अकादमी का जो महा साहित्य यूट्यूब चैनल है उस पर प्रसारित किया जा रहा है। जो 5 एपिसोड हो चुके हैं वो अकादमी के यूट्यूब चैनल पर महाराष्ट्र स्टेट सिंधी साहित्य अकादमी इस प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अकादमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी कार्यक्रम देखें। आपके जो कार्यक्रम आपको कैसा लगता है उसके कमेंट्स नीचे दें। इसी के साथ इस वर्ष अकादमी ने कुछ आयोजन किए हैं, जिनमें 4 कवि सम्मेलन है। भगवंती नावन जी की जयंती पर एक कार्यक्रम अकादमी ने आयोजित किया था। अकादमी के नियोजित कार्यक्रम में सुरीना सिंधु एक कार्यक्रम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कार्यक्रम 5 मार्च को MMK में रखा है। अभी भी वाराणसी सर ने भी एक अप्रूवल दिया है, तो ये कार्यक्रम BTTC में भी होगा। राजा दाहिर सिंह जी पर भी एक नाटक हम नागपुर में कर रहे हैं। अमर शहीद हेमू कलानी जी पर इस साल लगभग और 3 प्रोग्राम नियोजित है। 23 मार्च को उनका जन्म दिवस है, तो कल्याण में अत्रे रंगायतन में भी एक प्रोग्राम रखा हुआ है। सिंधी भाषा और सिंधी साहित्य और सिंधी संस्कृति के लिए अकादमी काम कर रही है। मां HSNC बोर्ड एंड HSNC यूनिवर्सिटी जा प्रेसिडेंट ऑनरेबल सेक्रेटरी जी, ऑनरेबल VC मैडम, ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर, तवांजा सभी सिंधी जो आशिकन जो शुक्रगुजार आया। मुखा चेकरे सिंधी लफ्ज में गलती थी हुजे तो मेहरबानी करे, माफ करे, मेहरबानी। तव्हांखे असां इहे चरींदा खां उन से असांजे HSNC यूनिवर्सिटी जे पारां असांजे बोर्ड जे पारां एंड किशुमन सुखानी सर इज देयर ऑन हिज बिहाफ सभिनी जे पारां ये छोटी सी नंढी सी हुजे। इहा सिंधी संगत आहे ऐं तव्हांजी मराठी संगत असांजी इवन हिंदी संगत गॾे करे सघूं था। ठीक है, thank you so much for all the support you have been giving me. So many programs we have done with Sahitya Academy. We'll continue doing that. Thank you. Thank you so much. सचिन जी, this is yours. Yes, हमने आपको आधा सिंधी तो बना दिया है। Yes, madam. अगले साल तक बन जाएगा। नेक्स्ट फ्यू बार पूरा बना देंगे। थैंक यू सचिन जी। हाणे असां नींद ॾींदासीं जया हसरानी जी खे। जया जया हसरानी जी अगेन आई थिंक द नीरू खां 2 साल वधीक कमु कयो आहे स्टेज ते। She's senior to you. Neeru 43 साल कमु कयो आहे। Jaya has worked on Sindhi stage for 45 लगातार continuous years and she must have performed at least 400 different roles. 45 साल में I've done more than 2000 shows. Yes, 2000 shows, 400 different roles, and today we are giving her another role of Ma Sindhan. Ma Sindhan poem again has been written by Rashmi Ramanaji from Indore. उनजी पोइम में असांजी अॼु सची सिंधन उनजी पोइम पढ़ंदी। ओवर टू यू जया। महिरबानी। मूंखे तमामु घणी ख़ुशी आहे जो मूंखे इहा पोइट्री पढ़ण जो
वच ॾिनो वियो आहे। मां सम्झां थी मां हिन सां इंसाफ़ कंदसि। पोइट्री जो उनवान आहे मां हिकु सिंधिण। मां पैदा थियसि आज़ाद देश जे उन इलाके में जिते मां फ़क़ति हिकु सिंधिण हुअसि। कल्ह ताईं जॾहिं मूं न सिखी हुई सिंधी ॿोली, न पढ़ियो हो इन बारे में त केरु हुआ सिंधी, कीअं हुई सिंध, किथां पैदा थी सिंधी ॿोली, छा आहे असांजो वरसो। अणॼाण हुअसि मां इन जज़्बात खां जेको समायल हूंदो आहे कंहिं बि जातीअ जे बाशिंदे जे शरीर में रत मास जा। मूं न ॾिठी सिंध, न महसूस कई सिंध जी आबहवा, न कॾहिं सोचियो पंहिंजी रवायत ऐं वरसे जे बारे में। पर अॼु महसूस करे रही आहियां सिंध जो वहकिरो पंहिंजी रत जी रवानीअ में। अॼु महसूस करे रही आहियां सिंध जो वहकिरो पंहिंजी रत जी रवानीअ में। अंदर में नज़र थी अचे सिंध जी उदास ज़मीन, मेरा झड़ो आकाश, शाह जे सूरमनि जा मायूस चेहरा। हाणे मोहन जो दड़ो मुंहिंजे लाइ पत्थरनि जो ढेर न, आला सभ्यता ऐं संस्कृतीअ जो मर्कज़ आहे। छा इंसान जे वजूद में समायल हूंदो आहे हुन जे जातीअ जो सत। अचानक एतिरी शिद्दत सां छो थो महसूस थिए त मां सिंधिण आहियां, मां सिंधिण आहियां, मां सिंधिण आहियां। मां सिंध जे वतन वारिस, सिंध जे जला वतन वारिस आहियां। महिरबानी। Lakshmi Ramani actually पाण पहिरीं हिंदी में लिखण शुरू कयो and then she moved over to Sindhi. Vivek ji, do you want me to translate for you? No, Vivek, आपके पास डाउट है, आप हमारा कार्टून तो नहीं बना रहे हो ना? नहीं, not at all. Vivek Maitre ji is a cartoonist and he has made 65,000 cartoons, correct? I'm a poet too. I know, then we'll call you for a poem too. We'll call you for a poem, you can read in Marathi. So for in 35 years, he has made 65,000 cartoons. So और एक आज अब ऐड तो नहीं करेंगे ना हमारा? Would you like to say something? Let me go through. Okay, you collect your thoughts. Thank you, Jaya ji. Now we asa Indore घूमी आया सी, Sindh घूमी आया सी. Now we'll go to Spain, where we have Goldie Uttam Chandani waiting to read her poem. Goldie, good. Young, huh? She's young. Jai Jhulelal. Jai Jhulelal, Goldie. Just a minute before you start. Goldie जेतोणीक मैड्रिड में जाई ऐं पलिया पर सिंधी ॻाल्हाईंदी आहे, लिखंदी इंग्लिश में आहे पर ॻाल्हाईंदी सिंधी आहे. I've seen your videos where you're teaching your son how to speak Sindhi. मूं ॾिठा आहिनि उहे. So you read 2 poems today, Universal Soul, right? ऐं मूं हिनखे ॾिठो आहे, ॾिठो सुठी सिंधी ॻाल्हाईंदी आहे। Videos to सुठा ठाहींदा आहियो। असां हुते स्पेन में हो न सम्मेलन, she was part of that. Asha ji has met you in Spain. तव्हां मूंखे सुञातो आशा जी, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी। राणी बिल्कुलु मूंखे ॾाढो सुठो लॻो, ॾाढो सुठो लॻो। And again, thanks to the digital world, we all are here. Please Universal Soul. थैंक यू। ॻाल्हाइण खां पहिरीं मां रुगो शुक्रगुज़ार आहियां राधी भाऊ सुशील गजवानी जी जो मूंखे हेतिरो सुनहरो मौक़ो वेठा आहिनि भाऊ। तव्हांखे शुक्रगुज़ार आहियां छो त तव्हां मूंखे हेतिरो सुनहरो मौक़ो ॾिनो आहे हेतिरनि कलाकारनि जे अॻियां ॻाल्हाइण जो। ऐं मां सचपच अॼु रग रग में सिंधी फील पई कयां ऐं अॻाणे कंहिं चयो त भई सिंधी ॿोली खां वधीक आहे, हिकिड़ो अहसासु आहे जेको असीं पंहिंजे रत में खणी घुमंदा आहियूं। त पहिरीं मां शुरू कंदसि यूनिवर्सल सोल सां। इन कविता जो जेको थॉट प्रोसेस आहे उहो आहे
असांजी जेका नई पीढ़ी हींअर मां बि थर्ड जनरेशन में पंहिंजो पाण खे आइडेंटिफाई थी कयां त असीं कीअं पंहिंजो पाण खे दुनिया में महसूस कंदा आहियूं सिंधी थींदे. So I'll start. A señorita, they call me here. Here is where I was born. But here is not my only home. I possess a double chromosome. Café con leche for breakfast. Chapati or two for lunch. Masalas and olive oil. Quite the culture crunch. A thought in English. Argument in Spanish. A prayer in Sindhi. I'll sing to you in Hindi. I am the Morena Madrileña, the foreigner who orders a tikka baguette, will search the aisles for Spanish vino, get excited to see a chai latte, but get the cappuccino. I am the changing traveler, the linguistic gambler, a Spaniard in India, an Indian in Spain. A mishmash runs through my vein. In a fight to be one or another, creeps in a third other, a lover of the orderly fashion, a lot of irony and sarcasm. Britannia, you will always be in me. I will always carry an umbrella, or in case it rains. I am from many soils. I wear multiple coils. Do I have identity crisis? No. I call it a universal soul license. Thank you. The dispersion genes? I'm sorry, yes. Yes. Hanama, Yes. Dispersion gene थोड़ी अलग है. इन कविता जो जेको thought process हो सो partition सा ताल्लुक तो रखे. मु partition experience कोन कई है of course, पर मु किताब पढ़िया आहिनि. साज़ अग्रवाल जो किताब पढ़ियो अथमि. मु पंहिंजे ॾाॾी ऐं नानीअ सां घणेई दफ़ा इन्हनि ॻाल्हियुनि जे बारे में ॻाल्हायो आहे. उन्हनि खे कॾहिं दिलि कोन हूंदी हुई ॻाल्हाइण ते. अॼु मां सम्झी थी सघां छो. Sure, correct. So this is called the dispersion gene. Oceans divide the places we've said goodbye, but we continue to swim the unfamiliar overseas. At birth, we inherit the dispersion gene, a proud circumstance invisibly known only to those our own, passed on to me and all the generations in between. This gene, a serendipitous inheritance, came overnight, in the middle of the night. No one could put up a fight. We left with grace and honor, a few pennies of faith, surnames reputed with goodwill, and the strength of Jhulelal to wonder. Motivated by this incessant trot, an undercurrent of networking ties, we have created a patchwork of kites flying across the skies of the world. Hyderabadi or Bhaiband, Shikarpuri or Saithi, bound by the same tongue. The spread of Sindhiat continues. Navigation of multiple nationalities, even in disparity, blending into similarity. A chameleonic safari from Chile to Chennai, diasporic phenomenon. Partition displaced us into exile. We lost our homeland, but took the world to mother us back with her two hands.
नहीं हुआ तो कभी Wow, good. I would like to tell you one thing. In your first poem, I love this. I love the reference of prayer in Sindhi. While playing mother tongue automatically comes Prayer in Sindhi. That's Yes. true. That's very, very true. While praying, we automatically switch over to mother tongue. Thanks a lot, Goldie. It was nice being with you, and we'll see you again in our next program. Thank you. Thank you. Thank you. Jai Jhulelal. Jai Jhulelal. And now I would like to invite Shobha Lalchandani, who is the editor of Hindwasi paper. Hindwasi weekly paper is more than 100 years old. And Shobha, उनके समझने लगे अकादमिका 3 सालन का 36 सालन का, and Shobha is my elder sister, and कुछ भी काम हम एक दूसरे के बगैर नहीं करते विवेक जी. This is the news for us. This is the news for us. This is the news for us. So many who don't know Shobha and me. And Shobha ji today will again read a poem, Jeka Pana Likitan on Sindhyata. And Shobha ji is the editor of a magazine called Sippo. That is what Gajwani Sahab has done today. Sippun Ma Moti Gole Aya and Ekamala Piroitan. One of them is Shobha, a loving sister. Love you. I will stand it. जीअं त कल्ह मातृभाषा ॾींहुं हो. Oh yeah, I forgot to mention. Thank you. त उनजे उपलक्ष्य में मां हीअ पोएट्री लिखी हुई, 2 साल पहिरीं लिखी, पर कढी हिन दफ़े आहे. त उहो असांजे सभु कबड मां कढ माण्हू पोइट्री. हा, मां शाइरा त कोन आहियां, पर कॾहिं कॾहिं इहे पंहिंजा अंदर जा उद्मा जेके आहिनि उहे असां कढी इहे लिखी छॾींदा आहियूं. बसि थी वियो त थी वियो, कंहिंखां चेक न करायो आहे, कुझु बि न. जीन्स में आहे. हा, जीन्स में आहे. असांजा माउ पीउ अञा ताईं आहिनि, ॾिसंदा हूंदा, ख़ुशि थींदा हूंदा भई धीअर कमु थियूं कनि. बाफ़ो निकिरंदियूं अॼु. हा, त मां पढ़ी तव्हांखे ॿुधायां थी. यादि नथा करे सघूं, नंढा हुआसीं त यादि कंदा हुआसीं, हाणे वॾनि में शर्म थो अचे, यादि कीअं कबी. तॾहिं मम्मी जे डप खां हिस्ट्री जोग्राफी यादि कंदा हुआसीं न. हाणे त केरु, हाणे ॿारनि खे दॿो कढंदा आहियूं, पोटनि खे भई पढ़ो, यादि कयो सभु. त मां तव्हांजे अॻियां रखां थी, भुल चुक का थी हुजे त माफ़ कजो. सिंधियत. आख़िर 75 सालन में सिंधियत हिंद में रही बीमार थी पई. आख़िर 75 सालन में सिंधियत हिंद में रही बीमार थी पई. रही न हिन जी सुहिणी सूरत जीअण खां बेज़ार थी पई. बिटकी खाना बदोशन वांगुर पर घर पंहिंजो ॻोल्हे न सघी. बिटकी खाना बदोश वांगुर पर घर पंहिंजो ॻोल्हे न सघी. थकिजी हूअ बेहोश थी वई, रुली रुली बेहाल थी वई. जॾहिं पुटनि पोटनि खे सुध पई, साहित कलम खयो सगोई. पहल कई संगीत सुरनि जी, महफ़िल में शिरकत शायर कई. नाटक नृत्य रंगमंच सजायो, साधुनि संतनि खां दुआ कराई. वापारियुनि वसां कीन घटायो, वैद्यनि बि दवा धर्मल कई. पर लाहे न सघियो कोई बीमारी. सभु हीला वसीला पिया थकिजी. हाणे अर्थीअ जी थी तयारी, जो रही उमेद न बचण जी. कफन आंदो अरबी लिपीअ वारनि. पोटनि पोटियुनि पाती पाखर देवनागरीअ जी. पोइ शुरू थिया सिंधियत जिंदाबाद जा नारा. कुझु हलचल पैदा अर्थीअ में थी. सुजाग सिंधियत थी बेहोशीअ मां. सभिनी सिंधियुनि खे ललकार कई. मां न कॾहिं मरण वारी आहियां, मां आहियां आत्मा सिंधियुनि जी. मां न कॾहिं मरण वारी आहियां, मां आहियां आत्मा सिंधियुनि जी. अगरि मूंखे ख़ुशि ॾिसण था चाहियो, त कीन विसारियो ॿोली पंहिंजी. बेशक मोतियुनि जा दाणा आयो, पर रहो एकता जे माला में. Thank you, Shubha. Mehrbani. In all this, I forgot Menka Hacho. We have to read Mohan Gyani uncle's a poem. There's nothing else. No, there is many more things. There are many more things.
Hi, we are going to Bhopal because Mohan uncle No, is he's sitting in there. Delhi now. He's in Delhi? No, he has gone to He's Delhi gone to now. Delhi. He is not in Bhopal. Wapas, we're Delhi for good or Good, good. Mohan Gehani uncle does not need any introduction. उहे सिंधी संघ जो चेयरमैन है ये तो ॿुधायो सिंधी माण्हुनि खे। संगत जेके आशा जी NGO आहे उन जो चेयरमैन आहिनि. He is a consultant too. And he is my guru because जिते मां confused थींदी आहियां को अखर न ईंदो आहे त सिधो मोहन अंकल खे फोन कंदी आहियां. What do I do now? अच्छा लिंक मोकिली अथव न फोन हाँ. क्या दे तव्हां मोकिली अथसि? Which page? 67. So in 2015, we brought out this book, Brittle Ice by Copper Coin, when he translated his own poems and asked me to help him edit them. And we read it in Sindhi. I will read the It's a Sindhi bilingual version book. and Menka will read English. This is not that I don't know English, but Menka has edited. So she shall do the honors. Mohan uncle, this is for you, love you. Mohan ji dare ji nartaki zaban khol. मोहन जी दरे जी नर्तकी जबान खोल. मोहन जोदारो के एक डांसिंग गर्ल आपने देखी है, उनको बोल रहे हैं कवि आप भी तो जबान खोलिए. इंग्लिश में होता है. हाँ. धरती जे गर्भ में लुचंदर लावा जिया, धरती जे गर्भ में लुचंदर लावा जिया, सदियुनि जी खामोशीअ खे चीरे आवाज कर, सदियुनि जी खामोशीअ खे चीरे आवाज कर, अॼु जो शोर हैरत विचां सन्नाटे में बदिलजी वञे. अॼु जो शोर हैरत विचां सन्नाटे में बदिलजी वञे. मोहन जी दरे जी नर्तकी ज़बान खोल. Dancing girl of Mohenjo-daro, break your silence. Speak out so that the suffocating, agonizing, restless silence contained through centuries, struggling to come out of the womb of the earth, may erupt as a volcano, and today's noise be stunned in silence. Very good. Excellent. This is what the old जेको ई translation. जोश है ना कविता में वो वधीक अंग्रेजी में तो नजर अचे. सिंधी में वो लाभ अंग्रेजी में कोने माण्हू में आहे जोश. माण्हू में जोश आहे. मोहन अंकल has मोहन गहनी जी एतिरे घटि अखरनि में ॾाढी वॾी ॻाल्हि चई आहे. पर मूंखे अञा मोहन जी हिकु ॿी पोइम पढ़णी. ईअं त आहिनि सभु सुठियूं पर असां हिकु ॿी ॿोली आहे which is very very short and sweet. We need to take 1 or 2 seconds. कोलंबस ओलह वञी ओभर पहुचण जो रस्तो तलाशियो. कोलंबस ओलह वञी ओभर पहुचण जो रस्तो तलाशियो. मुंहिंजे घर भरिसां चौवाटो, मुंहिंजे घर भरिसां चौवाटो, कहिड़ो रस्तो वरी वापसि सिंध वठी वेंदो. कहिड़ो रस्तो वरी वापसि सिंध वठी वेंदो. So this is our second book together, While Sowing Dreams. It was published last year and Saz Agarwal had published it. This is also bilingual and it is available on Amazon. I have to put in this little marketing thing so people will buy his book. Columbus went west to find a way to the east. Near my house is a crossroad. Wonder which way would take me to Sindh. Thanks. Thank you, Venka. Thanks a lot. Be done. No, later. We have one young boy who's sitting there in the corner. Shlok Chanchalani. Please, Shlok. जब तव्हांखे चयो कि गजवानी साहब सिपुन मां मोती गोले ईंदा आहिनि. So we have found this young boy, come this side, whose name is Shlok Chanchalani. He's only 10 years old, but he writes. He's a Sindhi. He writes in English, but we don't mind it, but we want to hear your poem. And he writes, how many poems have you written? Written quite many, but I've seen only 2 now. And I heard you write limericks also. Yeah, limericks also. So next time we'll have that session. Yes. And you have promised me one more thing. Will you tell them this? What your Yeah, one is? that next time I'll try to write in Sindhi with the help of. पर एक गाल बुधाए तो फिर सिंधी गालान समझंदो है? थोड़ा सा. ना ना सिंधी गालान Rasa Sikha. So first thing you have to begin with Asha Chan auntie's
Cindy app. I'll forward it to you. Download from the. You learn on your own. Now you have to say it loudly. Okay, now what's the title of your poem? What you find in Mumbai, it's written by me for one project, so I thought I'd say. What do we find in Mumbai? Yes. Okay. You, lovely. you find auto rickshaws, local trains, cars, and taxis whizzing by every day. Bhel puri and vada pav, scrumptious street food we say. Dazzling skyscrapers here shine, accompanied by the police charging a fine. Over here the Queen's necklace does stand. Here is the gateway of India, high and grand. Wow. Here the Dabbawala service thrives. To visit the national park, everyone strives. Long time ago, Mumbai was divided into 7 islands. But now through roads too, they have joined hands. Wow. But through hearts too, we stay connected. Hence, Mumbai's diversity is worldwide respected. Very good. The next poem. Yes, I also love it. Yeah. Come on, next. What's the next title? My next title is on nature. It's a poem about nature and humans' greediness and how we are consuming our natural resources. We want more. 2 eyes, 1 face, neck, body, and limbs 4. But we want more. Flourishing crops, pure soil, lush trees, and birds that soar. But we want more. Glass, tin, bronze, steel, stone, all hard from the core. But we want more. Wow. We only take and don't give, and soon Mother Nature will be left with none. And at that day, we will be done. So let's not only take, but give too, for blessings old and new. Thank you. Jai Jhulelal. Jai Jhulelal. Okay, thank you. Thanks a lot. Very nice. सिंधीअ में लिखंदे सिंधी ॻाल्हाईंदे न त सभिनी में जल्दी मशहूर थी वेंदे हिंदी अंग्रेजी में वेठो भॼ महिनत कर पहुचण में टाइम As we told you all that it is in our genes, writing poetry, which has come to us from our parents. So today we would like to read a poem written by my mother. And I invite Gajwani Sahab to read it in Sindhi because he's the one who discovered that particular poem. Actually, I'm ashamed कि मुँह पढ़ी कौन ही ध्यान कौन दे दो till he brought to my notice that it's such a wonderful poem. Please, Gajwani Sahab. गजवानी के तरफ बंगेली पोएम सुपर Jai Jhulelal. Life is a paradox, right? Quite often, life is a paradox. Zindagi mein visangati, थींदी रहंदी आहे जेको चाहींदा उहो न थींदो आहे मुख़्तलिफ़ कुझु थींदो आहे हिन पोएम सां रिलेटेड साहिर लुधियानवी चयो मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया ॾाढो हिकिड़ो क्लासिक गानो आहे जंहिंमें अचे थो कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए आनंद बख्शी कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए मन मीत जो घाव लगाए तो उसे कौन मिटाए चिंगारी मराठी अरे संसार संसार जसा तवा चुलीवर आधी हाताला चटके तवा मिळते भाकर पहारी दुनिया जीअं चुलते तव या तव चुलते पहिरियां सड़े हथ तॾहिं मिले रोटी 4 lines 12 words Bhainabai Chaudhary defines life, explains life, that's it. Percy Bysshe Shelley. Our sweetest songs are those that tell of our saddest thoughts. शैलेंद्र converted that to है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं जब हद से गुजर जाती है खुशी आंसू भी छलकते आते हैं पारू ठाकुर चावला चयो न नाज कमायो न न्याज कमायो
न नाज कमायो, न न्याज कमायो, न साज कमायो, न आवाज कमायो। नाज ऐं न्याज रहियो अधूरो, साज ऐं आवाज ख़ामोश थी विया। प्यार खिसकी वियो हथनि मां। न रोअण कमायो, न परचण, न रोअण कमायो, न परचण, न धड़को कमायो, न दाग। रोअण ऐं परचण अधूरो, अभोग रहियो। धड़को ऐं दाग अजायो थी। न मोहब्बत जो इज़हार कमायो, न चुप रहण कमायो। न मोहब्बत जो इज़हार कमायो, न चुप रहण कमायो। न शिकायत कमाई, न शिकवो कमायो। मोहब्बत जो इज़हार ऐं चुप रहण ॾेखाव थी पियो। शिकायत ऐं शिकवो रुसवाई थी पई। प्यार खिसकी वियो हथनि मां। न ॿाॾाइण कमायो, न रुअण कमायो। न ॿाॾाइण कमायो, न रुअण कमायो। न झुरण कमायो, न झिझण कमायो। न ॿाॾाइण कमायो, न रुअण कमायो, न झुॾण कमायो, न झिझण कमायो। ॿाॾाइण ऐं रुअण कहाणी बणियो आहे। झुरण ऐं झिॾण जीवन बणियो आहे। प्यार खिसकी वियो हथनि मां। थैंक यू। Thank you, Sushil ji. Very good. And I must thank you for the English adaptation, because I got motivated. Then I have translated the entire book, Mummy's book, into English and Hindi, waiting for publishing. But this poem, I will read the English version now. Ma'am, sorry you missed it. Sushil ji read a poem written by our mother in Sindhi. हमारे English में थी पढ़ा, लेकिन हमने नहीं adapt कर मुझे नहीं आया. Oh. The title of the poem is "And Love Just Vanished into the Unknown." Neither did the pride help, nor did the sacrifice work. Neither did the creation help, nor did the call work. Pride and sacrifice remained futile. Pride and sacrifice remained futile. The creation and the call turned ineffective, and love just vanished into the unknown. Neither did the anger help, nor did the cajoling work. Neither did the rebuke help, nor did the guile work. The anger and the cajoling were mere outbursts. The rebuke and the guile were in vain, and love just vanished into the unknown. Neither did the expression of love help, nor did the silence work. Neither did the expression of love help, nor did the silence work. Neither did the complaining help, nor did the groaning work. The expression of love and the silence became an act. The expression of love and silence became an act. The complaining and the groaning became a disgrace, and love just vanished into the unknown. Neither did the yearning help, nor did the tears work. Neither did the withering help, nor did the wilting work. The yearning and the tears have become a story. The yearning and tears have become a story. The withering and the wilting have become life, and love just vanished into the unknown. Mummy is not there. I wish I Can I say something here? Yes, of course. जेकॾहिं ॿारनि खे सिंधी सेखारणी आहे त ही पोयम डॉक्टर बालानी साहब ऐं डॉक्टर हेमलता जी खे चवणु चाहींदुमि. This Sindhi poem is what should be made compulsory in all schools, Asha, because that, jhuran, chidan, badan, all those alphabets are in that poem in Sindhi. They should be made compulsory in every Sindhi school is what I feel. Thank you. Thank you. मुझे तो जी ॿारनि जो जूस जीअं पंहिंजे ॿारनि खे हिब्रू लैंग्वेज सेखारनि था. He says, we have one writer has written about it. Jews, yes. That Jews actually, after getting their capital after 200 years, nobody knew their mother tongue. Nobody knew Hebrew at all. So what did they do? They made it compulsory for the children to learn. Okay, and after they learned in the school, they went home and same evening they taught their parents the Hebrew. Now the time has come that we Sindhis have to do something like that. And it is very important. Of course, over there, the government gave a lot of other things also, like, having a regular programs on radio that
how the parents will know exact pronunciations and how they can speak well if the children are making any mistakes. So for that reason, they made such arrangements that the children can easily learn at school and parents can get corrected themselves while listening to radio and the television and so on. So we have to do something like that. The time has come when if you want Sindhi, really Sindhi has to be given this kind of treatment by people like us, I will say. Yes, these days we are talking about the policy, mother tongue should be taught for the first 6 years to all the children. At least we should make this one effort to start with. Thank you. Talking about my mother, now we have her great granddaughter from Ahmedabad, Arohi Lal, who has written a poem in English. She couldn't come because of her examinations, but she sent her video. Let's watch the video. Her mother too writes, but they are in Ahmedabad now. Arohi Lal is 14 years old and her observation about everything in life is beautiful. In fact, she has written 22 poems and somebody has volunteered to translate them into Sindhi. So next time when Arohi is in Bombay, we'll have one more session in Mumbai. Sushil ji, would you like to call Mr. Maitre for one poem in Marathi? Sorry? Marathi make a poem, both of Of course, Vivek, of course. You have Vivek. Yes, of course. Style man, of course. Poem, but my observation. Yes, of course. Oh, We have one more poem to go though. you have one, the last one. Yeah, and we have. But I thought he's going to present a poem. No, I'm not going to present Please, poem. please, but- no, yeah. please present a poem because you said you're a poet. Observation later, first I'm poem that would. Honorable Marathi dignitaries. चालेल. No, it's okay. Honorable dignitaries in the room. And Bangla madam and all the poets and all the guests in this room. I'm really delighted that today I'm here with my friend, Mr. Praveen Shinde. He is also a director of one company, Vision Maharashtra, and director of our website, thinkmaharashtra.com. Okay. I'm really happy because I appreciated all the poems. I understood most of them because many of my friends, they are Sindhi. For example, the world famous skin specialist, Dr. Raj Harjani, is my friend. Okay. Businessman from Hong Kong, Mr. Kamlesh Gangwani, he is my friend. Okay. Then one CA, Ramesh Pariyani, he is my friend. So many of my friends, they are Sindhi, and whenever I call them, they say, Ma, theek hai. ठीक है. So, And we have common words, ahe, pani. yeah. And many of the words, they are from Urdu and Hindi. And not least my guru, Mr. Sushil Gajwani, he taught me filmmaking a few years ago, and we are connected for many years. And I really appreciate this language because it's very melodious language, like Konkani and Bengali. Sindhi is a very melodious language.
And whenever I read about Sindhi personalities from history and the present dignitaries and celebrities, I really appreciate your struggle. I really appreciate their progress. And so impromptu, I just wrote one small poem that I'm going to read, and I hope Sushilji will translate it into the good Sindhi. Okay. Suppose a Sindhi successful person, if he writes in Marathi, what he will write. Okay. Okay. So I request Sushilji to translate the same into because in crisis, all the Sindhi people, they stood like Himalaya. So my just small few lines are. We in Thane, we organize a similar function for last 4 years. Every month on second Sunday, we have a Kavya Maifil, and I'm a publisher. My name of my company is Udveli Books, and we have published more than 450 books. And I'm really looking for a person who can translate Sindhi poems into Marathi. Like Niranjan Ujgare was my friend. His wife Anupama Ujgare, she is also from Thane, and she is a good poet. And I have already read that book, which you mentioned just now. Okay. So my small poem is कर्तृत्वाचे मूक हिमालय, कर्तृत्वाचे मूक हिमालय, भीषणतेतहि निश्चल निर्भय. Means in crisis, we Sindhi stood like a Himalaya. Himalayas. So he will translate it into Sindhi. कर्तृत्वाचे मूक हिमालय, भीषणतेतहि निश्चल निर्भय. वारसा ऐसा मिळे आम्हाला, काय असे मग उणे, यशाने दुमदुमो त्रिभुवने, यशाने दुमदुमो त्रिभुवने. जय झूलेलाल. Thank you. Thank you, Vivekji. That was wonderful. Now this is the last poem, but not the least. It is the most important poem which Sushilji is going to present, and it has been penned by Mr. Nand Javeri, who would have come today here, but because of his ill health, he couldn't. This poem, Ma Pala Pala Jo Pandhi, speaks about the spirit of the Sindhis. Yeah. And I would not like to talk about it, but I want Sushilji to come and present it. Because it is the ultimate. जय झूलेलाल, जय झूलेलाल. ही कविता सेम है जेका मुंहिंजे दोस्त विवेक मेहत्री जेका थॉट ॿुधायो पंहिंजे कि ॾुखियाऊं हिमालय वांगुरु हुयूं, लेकिन असां पंहिंजे हिम्मत ऐं हौसले सां उन्हनि ते असां उन ते फतह हासिल कई. That's what his poem says. This is the same poem. विवेक, आता मी जे म्हणणार आहे ते तुमच्याच थॉटचा सोबत आहे, पण ते बऱ्याच वर्षापूर्वी लिहिलेलं आहे. ओके. Sorry, Geeta is there. Nand Javeri uncle's daughter. And Geeta Shroff, Geeta Shroff Nanda's is daughter is there. right there. Okay. I'm going to do it in English first and then Sindhi because I want my non-Sindhi friends to understand this. But before that, I would like to say, like Kavi Pradeep is known for his "Ay Watan ke, ay mere Watan ke logo." Sahil Ludhianvi, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. और हरिवंश राय बच्चन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लॉर्ड टेनिसन for whatever. This is one poem. Nandlal Javeri's one poem that should be the community anthem. ये कौमी गीत होना चाहिए सिंधियों के लिए. असाला कौमी गीत होना चाहिए. This is one poem I have used in all my corporate training workshops all over London, US, whenever I've been there, in Bombay, in Pune, in Kolhapur, name it, and I've used it. It's just whatever the community, whatever the language. I use it in English and Hindi both. What does it say? Ma pala pala jo pandi, a time traveler. Every moment was new. Struggle for survival was inevitable. Money wasn't lying on the ground. Money was buried deep down into the ground. I toiled hard and extracted a peso from the ground. With that peso, I bought a little grass. I gave some grass to a cow. The cow gave me milk. I gave the milk to my mother. Mother gave me blessings. I gave some milk to my stomach. Stomach gave me courage. With courage and blessings, here comes the punchline of Nandlal Javeri. With courage and blessings, I picked up a chabo, a basket. From a chabo to a pidi, from a basket to a roadside spread, from a pidi to a hatdi, from a roadside spread to a shoplift.
I'm from a huttery to a hut, from a shoplet to a shop. With that shop, I built schools, colleges, and hospitals, many, many hospitals. Schools, colleges, and hospitals I gave away to people. People gave me nothing. Not that I expected anything in return. Every moment continued to be new. Struggle for survival continued to be inevitable. Sensing the moment, I chose instability over stability. I created stability within instability. I created melody within jarring notes. I was a refugee. But with hard work and perseverance, I built homes and shelter for the trusted and not so trusted, for the loved ones and not so loved ones. But where is stability even today? Where is stability even today? There's chaos all around. Every moment is new. The struggle for survival continues to be so. So what if I don't have my own land, like you said the other day, doctor? So what if I don't have my own land? So what if I don't have my own shelter? Whatever I set my foot on is my land, is my sin. Wherever I am, I built homes and refuge. With hard work and persistence, I have created a brand new scent. No matter what, I'm a destiny's dancer. A dancer, Lord Shiva, I'm benevolence. Dancer, Lord Shiva, I'm benevolence. No matter what, I'm the destiny's merchant. No matter what, I'm the destiny's saudagar. I am a Sindhi. I am a Sindhi. I am a Sindhi. Nanlal Javeri, the greatest poet ever. I had hats off to that wonderful man. Sindhi में हर खिन नहीं हुई, मुकाबलो निश्चित हो. पैसों पटते प्यो न हो, पैसों पट में पूरे रहो. मुँह हथ हलाए पैसों कढ़ो पटमा पैसे वर तुम गाह दिनुम गाय के, गाय दिनो खीर दिनुम अम्मा के, अम्मा के आसीस. कुछ गाह दिनुम पेट दिनी हिम्मत. Here gaha grass is meant for food or whatever. कुछ गाह दिनुम पेट दिनी हिम्मत. हिम्मत है आसीस सा. हिम्मत है आसीस सा मुँह खाओ छबो छबे का पीड़ी का हटड़ी का हट. मुँह हट जोड़ा स्कूल कॉलेज अनेक अस्पताल. स्कूल कॉलेज अस्पताल उन्ना प्रजा कोने को घोड़ो मुँह किथे चाहे थे घोड़ो. हर पल हर खिन नहीं जो हुई मुकाबलो निश्चित जो हो. खिन सुनाने नित्य छदे मां अनित जो पांधी थियुस. अनित में नित जो निर्माण कयो. असुर में सुर जो निर्माण कयो. शरणार्थी पर पुरुषार्थ की छाव में आश्रम जो निर्माण कयो. पंहिंजे पराए वेसाए बेवेसाए के शरण ॾिनी. पर अज भी नित आहे किथे. चौ तरफ अनित जो ही आलम आहे. हर पल नओ आहे. मुकाबलो कायम आहे. पोइ छा जो मूंखे धरती न आहे. पोइ छा जो को अझो न आहे. पोइ छा जो मूंखे धरती न आहे. पोइ छा जो को अझो न आहे. जित जित मुंहिंजा पेर आहिनि. जित जित मुंहिंजा पेर आहिनि. साई मुंहिंजी धरती आहे. साई मुंहिंजी सिंध आहे. जित जित मां आहियां उत उत मां अझो अॾियो आहे. पुरुषार्थ सां नित नओं सिंध अॾियो आहे. अनित में नित जो नाचू आहियां. मां नाचू मां शिव मां कल्याण आहियां. अनित में नित जो सौदागर आहियां. अनित में नित जो सौदागर आहियां. मां सिंधी आहियां. मां सिंधी आहियां. सिंधी मूंखे फ़ख्रु आहे सिंधी थियण जो. मां पल पल जो पांधी. नंदलाल झवेरी, द ग्रेटेस्ट पोएट एवर इन माय ओपिनियन. Please come and give it a finale that we had thought about. Thank you so much. Thank you. Thank you, Nandlal Javeri sir. Thank you. मूंखे ख़बर न आहे फिनाले छा आहे. फिनाले तव्हां आहियो. मां सिंधी आहियां is the should be the last sentence of the evening. उन खां पोइ छा? हाँ मां सिंधी आहियां. हाँ मां सिंधी आहियां. पंजाब सिंध गुजरात मराठा अगर असांजे नेशनल एंथम में हिकु सिंध आहे
त बस काफ़ी आहे, उहो हिकु शब्द ई काफ़ी आहे, असांखे का जॻह न खपे, असांखे उहा फीलिंग खपे त असां आहियूं हिन देश जा. And I think that is the statement that fine, one Sindh can make us and bring us together. And this is what is, I feel and feel it. Ma Kher aaya, ma Sindhi aaya. And that is it. So I think over to you, Sushil ji, because this is what you have curated. Tahado Sundar, हिकु रसियो आहे, रास रचायो आज, जंहिंमें लेखक कवि भवानी साहब तव्हां आया आहियो, ॾाढी ख़ुशी थी आहे. आई थिंक उन खां पोइ इन खां वधीक छा ख़ुशी हूंदी ऐं केरु कंहिंखे थैंक यू चए. So I think this is the finale and you have curated this finale. So I thank each one of you for being here and making this wonderful evening. And before we leave, I feel that each one of you has to be thanked for making this evening ek Sindhit je lai, ek Sindh lai, and Sindh bhavna lai. Asan sab Sindhi aayin, and that is the finale actually. Thank you so much. And there's something for everyone, but I feel all the artists who have here and all those who have performed, all the guests should be thanked with small gesture, small token. So I request Ram to get things. I would like to end this with a couplet written by Dolan Rai Saab, who stays in Ajmer. We have traveled all over India. थोड़ा दादा के बदलना आसान Yes, मेहमान है. yes, I will read this. I'm going to call Dr. here. Sindhu Ghati Sabhyata Varso Aaye Mahan. Jaiji Azmat ke mane saro hi jahan. Varis aayu sab Sindhi gayu Gaurav Khan. Jainjo uncho shan daim kaim javij. Thank you. Can I request? So we can hand over from Balani sir. Doctor, ma'am, Doctor, I would like Dr. Mangla to. Oh, yes, yes. Sorry. I missed out. So sorry. Don't have anything to add to such a august thing. No, you have to add your one word. Acha, Doctor, please. Asan dil ne akhar jab doctor ayo, ta asli doctor ayo. So, I want to thank everybody here and very importantly, Mr. Sushil Kajwani, who's been, it was a very chance meeting. Somebody suggested my name to him for a TV interview. He spoke to me a couple of times. English is okay or should I speak in Sindhi? I can speak in Sindhi. I can speak in good Sindhi. So Sindhi में गालो ना. everybody should understand. मौको मिले हुआ है. अद अंग्रेज जैसा पेरी. Chance लगे. देखो chance हिकिड़ो उन्हनि खे नालो मिलियो कि कुझु टीवी इंटरव्यू चलायो उन्हनि मूंसां ॿ टे दफ़ा फोन करे ॻाल्हायो. उन्हनि मूं में छा ॾिठो मूंखे ख़बर न आहे. पर when I was जॾहिं मूंखे हुन शो लाइ घुरायो हुननि दूरदर्शन जो शो लाइ त हुननि इहा ई पोयम पढ़ी नंदलाल दवे जी and that got me hooked. माना I was sold out completely. Totally sold out. I mean, I always have taken pride in being a Sindhi. I have always taken pride in being a doctor. And if I am given a chance again, I will be a Sindhi again and a doctor again. And that's okay. So that goes without saying. That goes without saying. After that TV interview, Mr. Gajwani is such a benevolent man that एॾा दरियादिल आहिनि उहे एॾा दरियादिल जो हिकु ॾींहुं मूंखे फोन करे चवनि था कि डॉक्टर तव्हां नंदलाल देवर सां गॾिजणु चाहींदा? आई मीन उहो मौक़ो केरु छॾींदो? And Madam was our host, Geeta Madam, along with Nandlal Zaveri, and we were just for 4 hours with Zaveri Sahib. 4 कलाक असांखे थोड़ा लॻा. इन करे माण्हू कुझु चांहि पाणी कोन थो त 4 कलाक तमामु वधीक हूंदा आहिनि पर ही 4 कलाक असांखे थोड़ा लॻा ऐं मूंखे ईअं लॻो कि या कॾहिं इहो टाइम कॾहिं ख़लास न थिए बसि हिते हाणे टाइम बीह वञे. आई जस्ट शुड बी लिसनिंग टू एवरीथिंग. उन्हनि ज़वेरी साहिब खे एतिरो कुझु ॿुधाइण लाइ हो, ॾेखारण लाइ हो, बुक्स एंड हुन एॾी माना चङे एज जा आहिनि. हुन एज में बि वॉज माना पंहिंजे फोन ते खणी करे सिंधी में लिखनि पिया ऐं मूंखे फोन ॾेखारियो भई ॾिस मां सिंधी में कीअं लिखंदो आहियां, तूं बि सिंधी में सिख. सिंधी ॻाल्हाइण ईंदी आहे असांखे, सिंधी असांखे सम्झणु ईंदी आहे.
मुंहिंजी माता जी हुते वेठी आहे, उन्हनि मूंखे जाम कोशिशि कई अला फम बे भला सेखारण जी, पर लाइफ खे कुझु ॿियो हुओ मुंहिंजे लाइ। त असां अची वियासीं फ्लैश ऐं ब्लड जी दुनिया में। सुबुह जो ॾींहं जो राति जो माण्हुनि खे ऑपरेशन कयो, ही कयो, हू कयो, एंड देन डीलिंग विथ अ disease like cancer. This was again something tormentous. But then today's evening is something different. I mean, it has touched my spirit. Like all the poems, the poets will touch your spirit with their thoughts. And the thought processes were कुछ टाइम अगो हिकिड़ो like about 3-4 साल अगु के माण्हू वटि आया हॉस्पिटल में, हे चवनि था भई मूंखे फ्री ट्रीटमेंट जो हक़ आहे। त मूंखे थोड़ो गुस्सो लॻो, हक़ छा थींदो फ्री ट्रीटमेंट खपे त सरकारी में वञ, ऐं तूं कॉर्पोरेट आई त तो पंहिंजी सरकार में हॉस्पिटल छो न ठाही आहे। एंड देन आई रियलाइज द डेप्थ ऑफ अवर कल्चर। दैट डे आई रियलाइज द डेप्थ ऑफ अवर कल्चर, बिकॉज सिंधियुनि खे पंहिंजो वतन कोन्हे, पंहिंजो गांव कोन्हे। हिते चङनि ॼणनि चयो आहे की असांखे पंहिंजो गांव कोन्हे वञण लाइ। इट्स अ वेरी मार्मिक थिंग। जॾहिं असां स्कूल में हूंदासीं त माण्हू चवंदा भई हम गांव जा रहे हैं। हमारा गांव कौन सा है? बॉम्बे। Bombay शहर हमारा गांव है। The Sindhis have gone across the world, like Poland. You said that, and जिते जिते विया आहियूं असां पंहिंजी जवाबदारी सम्झी करे स्कूल और कॉलेजेस सभु ठाहिराया आहिनि, जीअं जवेरी साहब लिखिया आहिनि। उन माण्हू जेको चयो हक़ आहे, that got me thinking with a thought कि जेको हक़ घुरंदो आहे न उहो डिवाइड कंदो आहे, ऐं जेको जवाबदारी सम्झंदो आहे न उहो ठाहींदो आहे। So that is a big thing. That our culture is so strong that everywhere we have gone, not only here, but I have been in US also, and there's huge Sindhi population there who are absolute good philanthropists, and they help people and do lots of the language. So I am really proud to be a Sindhi. And to end, I'll just quote from Fayaz Hashmi's line: "My life is in flesh and blood." So my life is in the trap of time. तो वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर ये कुछ घड़ियां हैं जो हमारे लिए आजादी की हैं, तो मैं कभी इसको खोना नहीं चाहूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। I think one the fact that you are standing here, let me come sir. Yeah, okay. So doctor has proved the Ruh Ji Roti Aaye. Thank you so much for gracing this event, and जी वापस कुछ करें तो सुशील गजवानी जी, let's take I think we should start with Sushil ji, and Sab was here, so Sushil ji is the main sutradhar sadi program ja. Thank you so much. Small Asandi Barkha madam, Please don't pardon me. thank you so much. Thanks a lot. Thank you. I feel rejuvenated coming to the university. Asha Chand ji, I know I'm coming for PhD. I've decided. काफी इंटरेक्ट करे हुआ असां फोन पे, and मिली खुशी थी। आपके राज राजधानी हमारे प्राउड चांसलर किया हाणे फुलुट में रहते हैं ना। Asha, it's good to see you. मैंने कहा मैडम, she is writing the book of our HSNC board. Yes. And 72 years of existence of our HSNC board. हिते पार्टीशन थियो, and माण्हू सोचनि पिया किथे रहूं, छा कयूं, ऐं असांजे वॾनि, असांजे बुजुर्गनि, असांजे फाउंडिंग फादर्स कॉलेज खोलिया। हथ में कुछ न हो, पर उन्हनि कॉलेजिस खोलिया। उन्हनि जी एतिरी कहाणी हिकु किताब में बंदि करणु मुश्किल आहे, पर इहो ॾुखियो कमु मैडम पंहिंजे हथ में कयो आहे। थैंक यू सो मच। Writing this book is also meant meeting absolutely wonderful people like Bagla and all the trustees. So congratulations. It's likewise. Asani साहब, नीरू जी, आप चाहो तो मुझे नाडो अजीब नीरू, I call Neeru. What a fantastic rendition. It's such a wonderful. इतो सब याद किया है, ताकि समझे में न पड़े। इतो सब साथ में बनाया था। आपका चेहरा। Thank you so much. Thank you. शोभा मैडम। शोभा मैडम, हिंदवासी हलंदी रहे इन a best wish का।
सबनी का पहिरियों अची कम किया तव्हां अच्छा पकड़ो मूंखे माफ़ कजो I've fallen in love with you. Samita, God bless you. what's happening? It's okay. so beautiful. Yes. You can be in love with so many people. Like that. So what? Dr. Squire are here soon actually. Sejan? Thank you very much. जितना भी मैंने सुना बहुत सुंदर था I heard a lot about it. Yes. Thank you, everybody. Yeah, this Good boy. Anju, right? Anju, right? And you missed, you were not there when Shlok read his poem. Come at the front, beta. Acha. Yes, yes. Yeah. Where's the picture? Yes. Please remind me, I miss everybody. Yes, there. She missed. Yeah, please do. I was, yes, please bring it. I had gone out for a while, I believe. I missed a lot. Shlok read the poem. A young performer. No, आप इधर आओ, श्लोक. Yes. वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे. 10-year-old. A big round of applause for our young performer. So we will translate it and we'll sing with you next time. सिंधी सिखंदो Sindhi सिखंदो. Sindhi सीखा नहीं? हाँ नेक्स्ट टाइम सिंधी में पोएट्री लिखंदो सीखेगा? बात हो रही है Wow. Actually, he's the chief guest. Yes, yes, he is the chief guest. I miss Jaya. Jaya. Pusha. पार्टीशन टुडे झाली तिथे सगळं संपतील पार्टीशन 75 वर्ष झाली थोडे लोक आहेत ना Well, this is for everyone, and actually, I'm just giving those who perform. This is something for everyone. Thank you so much. Thank you. And thank you, Balani sir. He actually, I should thank Balani sir first because हिकु हफ़्तो पहिरियों मूं वटि आया ऐं मूंखे चई हे कमु करिणो आहे HSNC यूनिवर्सिटी में चई मूंखे तव्हां मूं ते छॾे ॾियो मां ऐं सुशील जी करे तव्हांखे बिल्कुलु कुझु न करिणो आहे बसि तव्हांखे अचिणो आहे and with that thought I got so much strength and our one meeting and second meeting 5-6 कलाक असां वेही रहियासीं बसि इन प्रोग्राम जे लाइ ऐं अंदरि like a deep हूंदो न you dive deep into the whole scene. We went that deep. असांखे मनी न पियो करे त न मां निकिरियो. And I think with this meeting, we are going to be together for many others. Yes. So thank you, you and Balani sir. Anybody else you missed out to thank here? But everyone, as I said, there's a gratitude for everyone. So once again, and thank you, and we can close this evening. Yes. Yeah. Thank you, everybody. Bali Gaddadansi, Awal Khair, Jai Jhulelal. जय झूलेलाल मेरे को See, one of them, SG, I need. नाही तो जिथे गेले आरोही जे करत Arohi, Amit, Rishika. Third,